you have been waiting for this session. The mixed emotions होंगे बच्चों के. I'm personally delighted to have him here, honored, and a lot of you kids are excited. जो भी adjective fit होता है आप fit कर लें अपने feelings को express करने के लिए. और सबसे मजे की बात ये है कि you know it's one-on-one, it's exclusive. You can also send all your questions here. I think that's amazing. मैं बदर को, so I have never met Badar, but personally, like whenever I hear his name, मुझे आता है Google दिमाग में, Twitter, Facebook, because मैंने पढ़ा था Twitter पे somewhere. I was following you on Twitter, and then I remember you were the first person to like on ground for Google, right? The country consultant or something. So ये मुझे बहुत पुरानी बात है, ये मुझे याद है तब से. That's how I know the name Badar Khushnood, which is why I said Badar is tech celeb on my LinkedIn profile. This is just the tip of the iceberg. Obviously, there's a lot more that Badar is engaged in, especially जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इनके introduction में. He co-founded Bremers. He also co-founded Fisheries. Bremers is basically a digital agency, full-service digital agency, and then there's Fisheries, which is one of the most popular leading D2C e-commerce platform in Pakistan. And there's a list of other things that I can talk about, but I think better yahi hoga ki main I'll hand over the podium, the virtual podium to Badar. Then Badar can talk about his background and take us through his experience, especially with the topic being the e-commerce and digital landscape in Pakistan. So I think yeah, over to you. Thank you so much, Irtifa. Thank you so much. बिल्कुल, आई थिंक जैसे आपने कहा हमारी गायबाना मुलाकात जो है वो कॉमन कॉन्टैक्ट है और बहुत स्ट्रांग है. सो आई थिंक वी नीड टू कैच हिम सम टाइम. एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपने कहा मिक्स्ड फीलिंग. आई डोंट नो, मैं उन लोगों से समझ चाहूंगा जिनकी अच्छी फीलिंग नहीं है. वुड लव टू लर्न इन Q&A के क्या चैलेंज हो सकता है. All positive. Okay, अच्छा नहीं, just kidding. So I would love to have your thoughts and questions ताकि मैं वो भी जितने आंसर कर सकूं. I am flexible on time. मैं quickly आपको थोड़ा सा अपना background context बताता चलता हूं, and happy to have those questions in the meantime as well. And once again, thank you Aisha for reaching out and pushing me, and Irtifa and Adan and Sara. काफी लोगों ने, so that's a lot of people in the background जिन्होंने किया. So quickly speaking, जी मैंने I've always been in Lahore. My schooling was with Crescent Model School. शायद आपने नाम सुना हो कभी. Not sure if it's still in the tier 1. और वहाँ से मैंने शुरू किया. I wanted to go to actually Air Force, but life changed. अपना course change करते रहते हैं for the life, and I learned it's better to go with the flow. So eventually ended up in economics and statistics, generally known as general science. I'm not sure कि अभी ये subjects इस तरह से ही हैं कि नहीं. And eventually ended up at the Lahore School of Economics. मगर एक चीज जो which I learned over the period of time, उस वक्त ये वो time था जब नए पाकिस्तान में computers आने शुरू हुए थे और इंटरनेट भी आ रहा था. अभी इंटरनेट आना शुरू हुआ था 95-96 वाले टाइम पे, और ये मैं उससे जरा से पहले की बात कर रहा हूँ. तो तब कंप्यूटर्स अभी नए आए थे. सो आई by a very accidental chance got hands on a computer which was 8088, not even a 286. This is pre 286 or 486, शायद कभी आपने नाम सुने हो. तो I'm sure आपकी जनरेशन को इतना नहीं आइडिया होगा, but these are like probably 1,000th the speed of what your slowest mobile phone is. इससे इतने slow थे वो computers. But वहाँ मेरी what I learned was कि मैंने उस computer को अंदर बाहर से बिल्कुल हर चीज समझ ली उसकी, literally, कि कैसे RAM क्या होती है, hard disk. And remember there was no internet, so I couldn't go to YouTube and search कि computer कैसे काम करता या computer के parts क्या हैं. So I literally had to go, in addition to my academics and padhai, I had to literally go to libraries like the British Council, Qaeda-e-Azam Library, and everywhere find the right tutorials, like in terms of वहाँ के magazines. PC magazine used to be very expensive क्योंकि तब printed books भी computers के बारे में बड़ी वो theoretical सी थी, इतनी practical नहीं थी. तो मुझे वो PC magazine और वो लेने पड़ते थे, और फिर मैं उनसे सीखता था, और फिर मुझे पता चलता कि hard disk क्या होती है और RAM क्या होती है और कैसे computers काम करते हैं. But anyway, that learning even as a non-tech person helped me a lot further, जो मैं आगे आपको बताऊंगा. इसलिए I'm just highlighting कि आप चाहे marketing पढ़ रहे हैं, जो भी आपका majors हैं, computers एक ऐसी चीज है जो
उसके बगैर इट्स अ क्रॉस कटिंग थिंग। जिसमें आप कोई भी बिजनेस करेंगे, कोई भी काम करेंगे, उसमें अकाउंटिंग और फाइनेंस समझनी जरूरी है, फंडामेंटल्स आपको। यू जस्ट, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप किसी भी बिजनेस में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी तरह के काम में, टीचिंग में, कोई भी है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आर द फंडामेंटल्स जो क्रॉस कटिंग है हर इंडस्ट्री के लिए। इसी तरह कंप्यूटर्स या टेक्नोलॉजी या डिजिटल जो है इज नाउ क्रॉस कटिंग, and you must learn and know the fundamentals of it, not deep dive into it, but the fundamentals of it at least. So moving forward, मैं लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गया, वहाँ से ग्रेजुएट किया मैंने इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में, एक्चुअली मास्टर्स मेरा उसमें, ग्रेजुएट मेरा उसमें। और मेरी पहली जॉब वाज विद निशात टेक्सटाइल्स, निशात चूनिया, और मैंने कपड़ा धागा बेचा। सो that's where I started off. So मेरी एक और लर्निंग ये थी कि पहली एक एक्सपीरियंस लेना जॉब पे जरूरी है। अगेन एंड I'm sharing this in hindsight कि अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना भी चाहते हैं तो शुरू के कुछ साल अपने करियर के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में is critical and is really helpful. So that experience comes in handy even today. जो मैंने वहाँ सीखा, it was hands-on, never negotiated on the salary or the package, just accepted it and worked there diligently. और वहां से मेरा पहला एक्सपीरियंस जो था वो थोड़ा सा आईटी वाली साइड पे होना शुरू हुआ, बिकॉज आई रियलाइज्ड कि वो लोग अभी भी इतना ज्यादा कंप्यूटर्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। मूविंग फॉरवर्ड, जॉइंड समीडा, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, but it's a government organization which is kind of, think of it as the Ministry of SMEs, small and medium businesses, and it is a attached department to the Ministry of Industries and Production. थोड़ी सी यहाँ मैं एक चीज इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये बात, you guys also as students need to learn and understand कि एक बिजनेस की पॉलिसी का एंगल क्या होता है और कौन सी मिनिस्ट्री क्यों रेलेवेंट है। सो जस्ट अ फूड फॉर थॉट एंड अ बिट ऑफ होमवर्क फॉर यू इज कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन एक है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से एक अलग है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इनकी वे डू दे ड्रॉ देयर लाइंस, हु डज व्हाट एंड हु इज रेलेवेंट व्हेन, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट। तो खैर एनीवे, मैं स्मीडा में मेरा पहला अपॉर्चुनिटी, जो मेरा पहला टास्क था, तभी रजाक दाऊद साहब भी मिनिस्टर थे, वो कॉमर्स के भी थे और इंडस्ट्रीज के, तो मुझे जो टास्क मिला वाज टू लॉन्च पाकिस्तान फर्स्ट एवर B2B पोर्टल। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2001-2 की। B2B पोर्टल लॉन्च करना था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल, एंड आई ओनली हैड 3 months, एंड 3 महीने में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बन सकती कि आप एक पोर्टल लॉन्च कर लें। इवन कॉर्पोरेट वेबसाइट टाइम पे बनाना 3 महीने में इज अ टास्क। So I suggested a shortcut, was approved, and I got in partnership with Alibaba. So I went to Hongshu, China, signed an MOU with Jack Ma and his wife, Kathy. Actually, उसकी co-founder है, Jack Ma की wife, Kathy. उसने अब काम करना छोड़ दिया, आप उसके बारे में ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। उनका एक ही बेटा और वो गेम एडिक्ट हो गया था ऑनलाइन, so she left work and she is now looking after him. So anyway, so I signed an MOU with them back then. और तब अलीबाबा was not very much known, तब it was in a very early days of e-commerce, उनके भी शुरू के दिन थे। और so then I ran that partnership for a couple of years. We worked with thousands of SMEs on that. So that was my first kind of a tech and business की आप समझ लें intersection पे काम मेरा, वहाँ से मेरी learning शुरू हुई। Moved forward, and I worked for a technology company called Asus. I don't know how many of you have seen Asus के laptops या routers वगैरह। It's a Taiwanese company, और मैं उनके पाकिस्तान का चैनल देख रहा था, it was sales and marketing. So remember, मेरी एक और चीज, मेरी कोई जॉब प्रीवियस जॉब से रिलेटेड नहीं थी। So like literally गवर्नमेंट में काम करना स्मीडा was not related to what I used to do at निशात, और Asus में जो काम मैं कर रहा था sales and marketing was not related to what I used to do with the government at स्मीडा। But मैंने जहाँ भी काम किया वो बहुत छोटी गिग्स नहीं की। आई डिड वर्क देयर फॉर फ्यू इयर्स जस्ट टू मेक श्योर कि मेरी भी लर्निंग पूरी हो और उनको भी मैं वैल्यू दे सकूं अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया है। तो अगर आप बहुत जल्दी जंप्स करते हैं, एंड अगेन फ्रॉम अ करियर पर्सपेक्टिव, आई थिंक दे आर नॉट टेकन सीरियसली अनलेस यू आर रियली अ फ्रीलांसर और आप सिर्फ गिग इकोनॉमी में काम कर रहे हैं। सो जस्ट क्लैरिफिकेशन देयर। खैर एनीवे, मूव्ड, तो असूस में मैंने हार्डवेयर वाली साइड पे काम किया। Moved forward and I got an opportunity to work with Google. I was Google's country consultant, on-ground country consultant, first ever in Pakistan. Google को भी नहीं पता था मुझसे क्या काम करना है, मुझे भी नहीं पता था मैंने Google के लिए क्या काम करना है, and this was a very honest kind of a process. They took a year-long process to hire me. तो मेरे कोई 30-40 इंटरव्यूज हुए होंगे डिफरेंट, और बहुत सारे, this is like I'm talking about 2005 to 2006.
और बहुत सारे इंटरव्यूज हुए, बहुत सारे चेक्स हुए, बहुत इंटरेस्टिंग वो साइकिल था जिसमें मैंने 1 साल के बाद उन्होंने फाइनली हायर किया कंसल्टेंट के तौर पे. And then I went to Google, spent some time there with them in Mountain View to figure out कि वो क्या करते हैं और मैं पाकिस्तान में क्या कर सकता हूँ उनके लिए. And so I was not the only one. So we were generally internally called scouts. Scouts का हमारा काम ये था कि हम लोग अपनी अपनी कंट्रीज जहाँ गूगल के ऑफिसेज नहीं है वहां देखें कि क्या गूगल की प्रोडक्ट या सर्विस ऐसी है जो कहीं कनेक्ट हो सकती है. इज देयर एन अपॉर्चुनिटी जहाँ गूगल और उस कंट्री में किसी तरह कोई काम हो सकता है. सो फॉर एग्जाम्पल आई रियलाइज्ड जब मैंने गूगल ज्वाइन किया, जो मुझे पहले अंदाजा नहीं था, कि गूगल की 300+ प्रोडक्ट्स हैं तब, बैक इन लाइक 2005-06. अब आई एम श्योर देयर बी फार मोर. तो बहुत सारी थी, जिस तरह अब आप देखते हैं क्रोम है, एंड्रॉयड है, बेशुमार चीजें गूगल की, गूगल होम है, बेशुमार चीजें. तो जब मैंने वो देखा तो आई रियलाइज कि कुछ चीजें थी जो पाकिस्तान में नहीं थी अवेलेबल, एंड देयर इज एन अपॉर्चुनिटी. One of them, which you right now probably use very implicitly and don't even realize कि वो exist भी नहीं करते थे पहले, were Google Maps. So there were no Google Maps in Pakistan actually. पाकिस्तान में जो मैप्स थे वो आपको स्टेशनरी बुक स्टोर, अनीस बुक कॉर्नर या इकबाल बुक कॉर्नर से जाके लेना पड़ता था प्रिंटेड, और उसके नीचे लिखा होता था डू नॉट कॉपी. अभी भी आप जाएं तो जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मैप्स हैं उनके नीचे लिखा होता है डू नॉट स्कैन और कॉपी, बिकॉज द लॉ डज नॉट अलाउ दैट. So keeping that in view, we came up with a product at Google, which was called Google Map Maker. So the idea was that every one of you or anyone could contribute their area, mohalla, town, gaon. और अब आज जो अब आप करीम उबर करते हैं रिजर्व या 1112 की एक एम्बुलेंस जो आपकी यूनिवर्सिटी की बिल्कुल पीछे जिनका हेड ऑफिस है, सो वो अगर किसी टाइम पर कहीं जगह पहुंच जाती है एम्बुलेंस, तो दैट इज बिकॉज they can find the shortest route, fastest route using Google Maps. But ये maps जो आप देखते हैं Google पे बने हुए, ये सब पाकिस्तानियों ने ही contribute किया. So they were drawn by Google because the law does not allow that. So मैं इसलिए आपको कह रहा था, जो मैंने पहले highlight किया था, you should learn कि ministries क्या करती हैं, कौन क्या allow करता है, disallow करता है. So अभी तो हमें बहुत सारा पता चलना शुरू हो गया है, जिसमें आप कभी-कभी सुनते होंगे पीटीए ने टिकटॉक बंद कर दिया या नहीं किया, या कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया. बट यू मस्ट लर्न फॉर्मली एंड अंडरस्टैंड कि ये रिलेशनशिप्स क्या हैं, हु कैन डू व्हाट, किसकी क्या जुरिस्डिक्शन है. तो सो दीज आर इंटरेस्टिंग. सो जब आप टेक्नोलॉजी कंपनी को देखते हैं, गूगल या फेसबुक या ट्विटर को या किसी भी पाकिस्तानी कंपनी को भी, तो याद रखें वहां खाली इंजीनियरिंग नहीं हो रही, वहां खाली प्रोग्रामर्स नहीं बैठे हुए, वहां उस टेक्नोलॉजी को रन करने के लिए बिजनेस मॉडल भी चाहिए. सो देयर इज अ लेयर जो बिजनेस रन करते हैं उसका. कुछ लोग डेवलप करते हैं, कुछ बिजनेस को रन करते हैं, कुछ उस बिजनेस की लीगल और पॉलिसी साइड को देखते हैं, कुछ उसकी ऑपरेशंस को देखते हैं, कुछ लोग उसके लिए फॉर एग्जांपल गूगल में, फॉर एग्जांपल सम ऑफ द बेस्ट पीपल आई हैव मेट वर एक्चुअली शेफ्स, गूगल के शेफ थे. सो आई मेड अ गुड फ्रेंड हु इज अ शेफ एट गूगल, और क्योंकि वो मेरे लिए, जब मैं गूगल के ऑफिस जाता था तो मेरे लिए हलाल खाना बनाता था, वो मुसलमान था. So I mean people have worked in these organizations in different roles. So जब आप किसी कंपनी को देखते हैं तो बहुत मायोपिकली सिर्फ उनकी टेक साइड को ना देखें, जरूर देखें कि उस कंपनी में बिजनेस रोल क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है. आप हो सकता है वहां एज एन एंटरप्रेन्योर उनके साथ कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे काम कर सकें, एज ए फ्रीलांसर कोई काम कर सकें. इवन जॉब्स उनकी जो है वो नॉन टेक जॉब्स भी होती हैं. So you must think broader when you're talking about tech companies. I just wanted to share जब आप देख रहे हो. So for example, like literally Google में massage centers में, हर massage rooms में हर जगह, and there are tons of masseurs as well, because that's a perk which Google offers to its employees. वहाँ laundry भी like on campus free है. So वो भी लोग उनको चाहिए, ऐसे भी लोग. So हर तरह की है opportunities. I'm just taking Google as an example. I'm just sharing कि बहुत opportunities हैं आप सबके लिए उस angle से. Anyway, moving forward, Google मैंने काफी साल काम किया, 9 साल. But just between and just to squeeze on time, just before Google, हम 3 दोस्त लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के जो ग्रेजुएट हैं, हम it's Badar Amir Zishan. We started this company Bramers. So Bramers is Badar Amir Zishan, and that's where the name comes from. So हमने इससे पहले कुछ और भी एक्सपेरिमेंट्स किए. हमने इंपोर्ट किए कंप्यूटर्स रिफर्बिश्ड, हमने कुछ जूते खुद से एक्सपोर्ट किए आइसलैंड, काफी हमने छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स किए. बट इवेंचुअली समथिंग व्हिच वी फिगर्ड आउट कि हमारा स्वीट स्पॉट बनता है जहां हम भी काम कर सकते हैं और हमें विद कैपेक्स ज्यादा नहीं चाहिए होगा. रिमेंबर तब कोई इंक्यूबेटर्स नहीं थे, एक्सेलरेटर्स नहीं थे, इन्वेस्टर्स नहीं थे, अभी उस तरह से फॉर्मली स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना इवॉल्व नहीं किया था. सो बट वी फिगर आउट कि दिस इज समथिंग वेयर वी कैन वर्क ऑन आवर ओन.
और हम बूटस्ट्रैप कर पाएंगे अपने आप को. So we started this company Bramers, और हमने कुछ ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स लिए और वहां से काम शुरू किया. Then we got a lot of local projects, and हमने जो नीश डेवलप की Bramers में वो डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम के अराउंड थी. कि आहिस्ता आहिस्ता लोग इंटरनेट पर आ रहे हैं, लोगों को ब्रांड्स को डिजिटल मार्केटिंग चाहिए होगी, सो वी शुड बी द लीडर्स इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग दीज सर्विसेज. बट जब मैं गूगल गया तो मुझे आउट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इश्यूज मैंने आई हैड टू लीव ब्रेमर्स, कि ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि मैं गूगल में भी काम कर रहा हूँ ब्रेमर्स में. तो आमिर एंड जीशान केप्ट ऑन रनिंग द कंपनी विद माय प्रॉमिस कि मैं 1-2 साल काम करूंगा गूगल में, कुछ सीखूंगा, वापस आ जाऊंगा. I spent about 9 years. So just imagine कि आपके पार्टनर्स कितने तंग होंगे आपसे अगर आप 2 साल के बाद 9 साल लगा दें. But anyway, ज्वाइन करने के फौरन बाद मैंने लिटरली दिसंबर आई थिंक 14th या 15th whatever या फर्स्ट को मैंने छोड़ा. 2014 को गूगल, 2 दिसंबर को आई जॉइंड ब्रेमर्स, द फर्स्ट एवर टाइम आई वेंट टू माय ओन कंपनीज ऑफिस. तो मैं जब गया तो मुझे मेरे गूगल के कुछ दोस्त थे ट्विटर में, तो उनका फोन आया, वो इंडियन ओरिजिन से, तो उन्होंने मुझे पंजाबी में इसी तरह कल से क्या कर रहा है. मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा, तो मैं अपने कंपनी में आया हूँ, तो कल से हमारी कंसल्टिंग भी कर ले. तो देन आई जॉइंड ट्विटर फॉर अ ईयर. जस्ट आई मीन देयर वर नो इंटरव्यूज, नथिंग. इट वाज जस्ट अ कैजुअल कॉल एंड आई नेवर थॉट कि हो जाएगा. आई थॉट मजाक कर रहे हैं, बट एनीवे, सो स्पेंट अ ईयर विद गूगल ट्विटर. गूगल में मेरा रोल बहुत डाइवर्स और वाइड था, और बट ट्विटर में मेरा स्पेसिफिक रोल था मीडिया पार्टनरशिप्स एंड वेरिफिकेशंस. आप देखते हैं ट्विटर पे लोगों के ब्लू टिक्स लगे हुए, वेरीफाइड अकाउंट्स हैं. So that was my kind of, I had to identify कि genuine लोग कौन है, because उसमें काफी गड़बड़ हो रही थी, and I had to come up with a formula कि how should we verify and blah blah. वो सारा मैंने and media partnerships की, because आपने notice किया होगा कि Twitter पे पाकिस्तान में लोग थोड़े हैं, but influencers हैं major, especially in terms of politics. तो हमारी major politics जो है और जो media है वो काफी वहाँ active है. So anyway, so that was my role with Twitter. Completed that year, and then I moved on, or by chance that very moment when I thought कि मैं वापस आ गया हूँ कंपनी में, तो अब मैं literally यहाँ रुकूंगा. But then I got an offer from Facebook, and that role was different again. By the way, remember Google का भी Twitter का भी role जो था मेरा वो Pakistan specific था. So as a Pakistani, I was not working in any of their other offices. I was stationed in Pakistan in Lahore as a consultant remotely, but working for both those companies for this specific region and country. Generally और पाकिस्तानी काम करते हैं इन companies में, but वो अब different roles में different countries में और roles में काम करते हैं, but not Pakistan specific इससे पहले. So Facebook में मेरा role बड़ा interesting था, and I'll tell you मेरा जो interview में एक question जो उन्होंने मुझे put किया, and I would let you guys think about it. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त 20 million Facebook users हैं. Back then जब मुझे उन्होंने hire किया, 30 million users पे जाना है. Zero marketing dollars हैं, zero marketing dollars हैं, zero team है, you are the only person alone, no marketing dollars, 20 से 30 million पे जाना है, और what would you do? So just think, आप marketing पढ़ी होगी, I'm sure आप सबने undergrad में. So zero marketing dollars, no team, the only thing I have is I had was my travel budget and like Facebook goodies, and that's it. And that was it. So that was the question put to me. So we'll talk about it later. Okay, what did I answer and how did it come out to be? So that was my role. और मैंने फिर moved on. So मैंने 6 महीने Facebook के साथ भी काम किया. And all 3 companies had their own kind of persona. जो आप, I'm sure आपने marketing angle से सुना होगा. So these corporates had their own persona, their own style of working and organizational differences as well. So, but they were really interesting for me, especially not being a foreign graduate. हमेशा पाकिस्तान में पढ़ाई की, nothing fancy. तब GPS नहीं होते थे मेरे टाइम पे, तो ज़्यादा mostly percentage, but just an average student. But a great opportunity, I must say, and I thank that time. So anyway, finally joined back Bramers in 2017 के end पे, properly fully. और सो ब्रेमर्स में हम क्या करें, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करें टर्न की in a very organized fashion and kind of at a with literally global best practices for tier 1 brands and SMEs and startups as well. So हमारा mix बड़ा अच्छा है. हम बड़े शुरू में we were very focused, हम बड़े FMCG focused थे, but over a period of time we have started to diversify and we have realized कि जरूरी है company की growth के लिए diversification. And so generally जिस तरह एक traditional agency structured होती है, so हमारे यहाँ ब्रेमर्स में एक बंदा एक ब्रांड के सारे काम नहीं करता. Everything is very focused.
So for example, there's a content team जो इनका काम सिर्फ content और creative वाली side का है. There is a community team जिनका काम community management है. There's a design team जिनका काम design का काम है. And then of course media buying or different functions हैं. So हर function का अपना अपना role है और वो इकट्ठे काम करते हैं of course with the same goal for a brand, but they are specialized deep dive into their functions rather than one person जो कि एक ही brand की सारा कुछ कर रहा हो, जो कि अब शायद probably कुछ साल पहले तक possible था, अब नहीं है possible. I think अब हर चीज में specialization बहुत हो गई है digital में भी. So you really need specialist जो design को, creative को, content को, community management को, media buying को, digital PR को, हर चीज को अपने अपने area को समझते हो, उसकी nuances को, उसके local culture को, हर चीज को समझते हो. So we have all those functions and that's how we operate. Within Bramers, we have worked with tons and tons of brands, alhamdulillah, so Facebook and Google have been our clients as well as Bramers. So we have worked for them as well on different assignments. We have worked with brands like Nestle, Samsung, PTCL, Coke, Pepsi, Telenor, and tons of other, Careem, Uber. So we launched Uber in Pakistan as their first agency on ground. So हर किसी का बड़ा डिफरेंट हमारा रोल था. मेट्रो कैश एंड कैरी, कारफोर, बहुत सारों के साथ काम किया, कुछ के साथ काम कर भी रहे हैं एक्टिवली. तो इट्स एन इंटरेस्टिंग लर्निंग. बट सर्विसिंग बिजनेस जो होता है वो बड़ा, जस्ट फॉर योर लर्निंग, इज वेरी ह्यूमन डिपेंडेंट, इज वेरी पर्सन डिपेंडेंट, बिकॉज आपने हर वक्त सर्विसिंग करनी है. उसमें ह्यूमन एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मार्जिन ऑफ एरर भी ज्यादा होता है, बिकॉज इट इज नॉट टेक प्रोडक्ट. Humans make mistakes, and hence you need to really be in control of the process ताकि आप minimize कर सकें ये risk. So you need to develop processes, you need to be less human dependent. फिर turnover भी होता है, ज़ाहिर है लोगों ने आना है, young लड़के लड़कियां होते हैं जो digital को समझते हैं, because digital natives ज़ाहिर है एक certain age से ऊपर नहीं जा सकते, तो उनका जो turnover है, they have to move to the next role as well. And hence you need to really plan accordingly कि लोग आते भी रहें, जाते भी रहें, तो process चलता रहे. And that's very important for any organization. जब आप लोग भी सोच रहे होंगे कहीं काम करने का, तो ये बहुत important है कि person dependent के बजाय process dependence develop करने की कोशिश करें. You can't really remove a person out of the organization, but you can still be dominantly process dependent versus person dependent. उससे ये फायदा होता है कि आप थोड़ा सा logically, pragmatically चल सकते हैं, because आप process dependent होते हैं. So that's one learning as well from a digital perspective. So इसके साथ साथ हमने जब ये business run किया तो हमने देखा कि इसकी भी diversification की जरूरत है, because digital में, technology के space में आप disrupt हो सकते हैं बहुत जल्दी अगर नई innovation आ जाए. So it can completely disrupt your ecosystem. So we thought it's better to diversify into the product side as well. So we experimented with a lot of products. शायद कभी किसी ने किसी टाइम पे all around का नाम सुना हो. It's a loyalty and discount, was a loyalty and discount app. So that was kind of our first big product in the domestic market. हमारी जो active products हैं, we shelved that product, हमने उसको sunset कर दिया था for its own reasons. But अभी जो हमारी दो active products इन पे हम focus कर रहे हैं heavily. One is a content management system for newspapers and TV channels. We run about 15 to 20 newspapers and TV channels. और याद रखें कि उन वेबसाइट्स को बहुत केयरफुली मैनेज करना पड़ता है, बिकॉज न्यूज़पेपर्स और जो मीडिया की वेबसाइट्स हैं, एक तो उन पे सिक्योरिटी का चैलेंज होता है, दूसरा उनको हाई परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, बिकॉज उनकी स्पाइक्स आती हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई तो एकदम ट्रैफिक आएगी. एंड रिमेंबर इन पाकिस्तान दीज मीडिया चैनल्स वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव काम चाहते हैं. So one quick solution is to use cloud hosting for such challenges. But cloud is super expensive for the amount of traffic our media gets. तो हमने उनको बहुत economical उनके साथ एक full stack optimized tech बनाई हुई है. We work with them. Not getting into the details, but the product name is Publisher. जो मेरा primary focus product है, that is fishery.com. It's an e-commerce platform where we are helping. Generally, it is called a DTC platform, direct to consumer platform, जिसमें हम enable करते हैं brands को कि वो अपने consumers तक directly अपने नाम से, अपने brand से उनको marketing कर सकें, e-commerce products को अपने promote कर सकें. So that's what we do with fishery.com. So उसमें हम उनको ना सिर्फ
उनकी मार्केटिंग करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग में उनकी हेल्प करते हैं, बल्कि हम उनको टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म भी देते हैं. So it's a little different than the marketplaces likes of Food Pandas and the Raz and Home Shopping and all of those OLX malls and everyone. So we have a different niche in that space within the e-commerce ecosystem. So that's been my journey. बीच में बहुत interesting होते रहे हैं incidents. I have lots to share, but this is where I've been. But कुछ चीजें मैं quickly numbers share कर लेता हूँ, then I'm open to Q&A and thoughts as well. So इस वक्त पाकिस्तान में from a landscape perspective अगर आप देखें तो we have about 100 million internet users in Pakistan. So this is the official PTA figure, Pakistan Telecommunication Authority. अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ टेलीकॉम इंडिकेटर्स का एक सेक्शन है, उसमें आप जाके हर वक्त अपडेट देख सकते हैं. Generally they update I think every week or every month. And it's a sub menu within one of the menus, telecom indicators. So 100 million का number हमने cross कर लिया. I think 101 or I don't know 105 million users. ये वो तो Telenor PTA हमें इस एंगल से बताता है, ये वो लोग हैं जिन्होंने 3G 4G का लाइसेंस या 3G 4G पेड कनेक्शन लिया है. So ये तकरीबन 100 million users बन रहे हैं, जो कि 10 करोड़ हैं. ये कितने बड़े या छोटे हैं? Just to put things in context, एक मुल्क सिंगापुर का आपने नाम सुना होगा. सिंगापुर की टोटल पॉपुलेशन 5 मिलियन है, टोटल पॉपुलेशन. यानी कि अगर आप उनकी सारी पॉपुलेशन को 5 कनेक्शन भी दे दें तो वो लाइक 25 मिलियन बनेंगे इंटरनेट कनेक्शंस. और अगर आप उनको 20 कनेक्शन एक पर्सन को, एक शख्स को वहां देंगे तो 100 मिलियन बनेंगे. इतना छोटा सा वो मुल्क है. सो वी हैव अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी कि हमारे पास 100 मिलियन यूजर्स हैं. चलो एक्टिव उसमें से शायद थोड़े होंगे, थोड़ा बहुत आप डिस्काउंट कर लें, डुप्लीकेट्स होंगे, मेरे पास भी 4 सिम होंगी, आपके पास भी, फिर भी इट्स अ ह्यूज नंबर एज एन ऑडियंस जिनको आप अगर आप कुछ बेच नहीं सकते तो एटलीस्ट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनके डिसीजन को इन सम वे, ईदर बाय मार्केटिंग और कंटेंट और वीडियोस और समथिंग. एंड रिमेंबर बहुत सारी सिम्स में बहुत सारी ऑफर्स हैं कि उस पे फ्री व्हाट्सएप है, किसी पे फ्री यूट्यूब है, सर्टेन मिनट्स और सो ऑन सो फोर्थ. सो दे हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन दीज सिम्स, जो कि बहुत उनके पास है. जैसे टिकटॉक के बहुत सारे मिनट्स होंगे, इस तरह की चीजें होंगी. सो इट्स एन इंटरेस्टिंग राइट नाउ इकोसिस्टम जहां हम प्ले कर रहे हैं. इसमें से सोशल मीडिया पे जो लोग हैं अप्रोक्सीमेटली इस वक्त वो तकरीबन 40 to 50 मिलियन के करीब है. इस वक्त जो अभी तक लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है वो अभी तक फेसबुक है. I'm sure TikTok will be crossing it soon, but right now we are with Facebook as the largest platform. So generally उसी को as a benchmark लिया जाता है कितने users हैं. Twitter पे I think 3 to 5 million users हैं, roughly around 3 million. बहुत थोड़े हैं but influential हैं, बहुत influential हैं. Versus Facebook जहाँ majority of the population आपको मिल जाएगी. तो 50% almost or a little less than that is on social media. बहुत सारे जो भी social media पे नहीं है शायद. They're scattered otherwise. ये डिजिटल मीडिया का जनरल लैंडस्केप है. फ्रॉम द ई-कॉमर्स पर्सपेक्टिव अगर आप स्टेट बैंक के नंबर्स को एक्सट्रैपोलेट करें लास्ट 4 क्वार्टर्स के, तो तकरीबन लास्ट 4 क्वार्टर्स में पाकिस्तान के अंदर $2 बिलियन की ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस हुई हैं डोमेस्टिकली. $2 बिलियन, बी फॉर बॉय. $2 बिलियन की ट्रांजैक्शंस हुई हैं डोमेस्टिक ई-कॉमर्स में. ये स्टेट बैंक के नंबर्स को एक्सट्रैपोलेट इस तरह से हमने किया ऑफिशियली as Pasha and Chain Store Association कि हमने ये देखा कि पाकिस्तान में तकरीबन 10 to 15% जो है वो ऑनलाइन पेमेंट्स है, 85 to 90% जो है वो COD है, कैश ऑन डिलीवरी है. तो जो 10 to 15% आपकी ऑनलाइन पेमेंट्स हैं वही स्टेट बैंक के पास डेटा है, उसके अलावा तो डेटा नहीं है. तो वो जो भी वैल्यू बनती है हमने उसको एक्सट्रैपोलेट कर लिया और हमने उससे एस्टिमेट किया कि टोटल मार्केट साइज क्या बनता है. Because otherwise कोई और तरीका नहीं है to do that, and you guys can probably come up with a better formula or a model on how to do that. Maybe that could be one of the assignments at some point in time for you guys to estimate कि exactly e-commerce का market size क्या है पाकिस्तान का. But it's an ever evolving, growing market size. दूसरा एक और हमने एक और तरीके से थोड़ा सा sort of different views on it. So e-commerce का एक तरीका हमने ये देखा, फिर हमने I'm involved in the policy making of e-commerce as well. तो हमने एक policy intervention की last year with State Bank during COVID, which is, or I recommend everyone to please do research and study about it. It is called a B2C cross-border framework. B2C cross-border framework.
सो अभी आप एक तो ई कॉमर्स ये है कि आप 2-3 तरह की ई कॉमर्स है। एक तो B2B है जिसपे अभी मैं आज बात नहीं कर रहा, इट्स अ लिटिल डिफरेंट। उसमें आप देखेंगे बाय द वे B2B में आप देखेंगे ताजिर, बाजार और इस तरह के नए स्टार्टअप्स में उन्होंने फंडिंग रेज की है। रिटेलो और इस तरह के 4-5 हैं जिन्होंने अभी फंडिंग रेज किया है। ताजिर बीइंग द मोस्ट लीडिंग वन, बिकॉज ताजिर ने जो फंडिंग रेज की है वो जिसको कहते हैं ना, जिस तरह इंटरनेट की दुनिया में गूगल को सब जानते हैं, इस तरह जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, वेंचर कैपिटल की दुनिया में जो नंबर 1 या टॉप ब्रांड इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने वहां से फंडिंग रेज की है। यूएस के जो टॉप ब्रांड वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है, उन्होंने आई थिंक $17 मिलियन जो समहाउ समथिंग अराउंड दिस अमाउंट रेज किया। इसी तरह सो B2B की एक अपनी स्पेस है। B2C में देखें तो एक B2C OMP हम उसको कहते हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेस। एनीवे सो B2C में ऑनलाइन मार्केट प्लेस OMP मैंने इसलिए बोला कि पाकिस्तान के लॉ में जो लैंग्वेज यूज की जाती है FBR में, वो OMP है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस कहते हैं उसको, जिनको हम जनरली मार्केट प्लेस कहते हैं, जैसे अंदराज है, फूड फंड है, उनको लॉ में लैंग्वेज में OMP कहा जाता है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस। एक और मैं आपको रेकमेंड करूंगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट पे पाकिस्तान की ई कॉमर्स पॉलिसी अवेलेबल है PDF में। आई वुड एनकरेज एंड रेकमेंड ऑल ऑफ यू टू प्लीज डाउनलोड एंड रिव्यू इट एंड स्टडी इट। पाकिस्तान ई कॉमर्स पॉलिसी अक्टूबर 2019 में कैबिनेट ने अप्रूव की थी। सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि वो जरूर डाउनलोड करके पढ़ें। इसी तरह एक पाकिस्तान की डिजिटल पॉलिसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ IT की वेबसाइट पे उसका ड्राफ्ट होगा। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि वो भी जरूर देखिएगा, जस्ट टू गेट अ सेंस के पॉलिसी लेवल पे इंटरवेंशंस क्या हो रही हैं। सो एनीवे, जो मैं आपको बता रहा था B2C ई कॉमर्स की जो इंटरवेंशन है क्रॉस बॉर्डर की, वो जरूर पढ़िएगा। मैं डीप डाइव नहीं करा, बट हमने एक छोटी सी चेंज लॉ में करवाई कि अभी आप जो बाहर पैकेट्स भेजते हैं, जिसमें अगर बाहर कंटेनर जाएगा तो वो एक्सपोर्ट कंसिडर होता है, उसके अगेंस्ट ई फॉर्म बनता है कस्टम्स का और सारा प्रोसेस है। हमने गवर्नमेंट को ये सजेस्ट किया, इंक्लूडिंग द स्टेट बैंक, कि अगर आप में से कोई एंटरप्रेन्योर है, किसी ने पेशावरी चप्पल बनाई है, किसी ने अजरक का चादर बनाई है, या किसी ने कोई भी हैंडमेड चीज, आर्टिजन है, कुछ भी बनाया और वो बाहर भेजना चाहता है, तो वो एक्सपोर्ट कैसे कंसिडर होगी? वो तो आप एज ए गिफ्ट भेजते हैं थ्रू DHL या वो, और उसके अगेंस्ट जो पैसे आते हैं वो एक्सपोर्ट की रेमिटेंस नहीं होती, वो आपकी पर्सनल रेमिटेंस में आते हैं पैसे। सो दीज आर लिटिल कॉम्प्लिकेशंस जो हमने ऑब्जर्व की। तो जब हमने उनको रेकमेंड किया, दे रिकग्नाइज द चैलेंज और उन्होंने लॉ में चेंज की। तो अब अगर आप कहते हैं कि मैंने एक नेकलेस बनाया हाथ से, आई डोंट नो, कैमल स्किन का या किसी चीज का कोई चीज बनाई है पाकिस्तान में, या ब्लू पॉटरी की कोई प्लेट्स बनाई हैं, और मैं बाहर भेजना चाहता हूँ कहीं, या भेजना चाहती हूँ, तो आप किसी भी ऑथराइज्ड डीलर के पास जाएंगे विद योर बैंक अकाउंट एंड NTN और CNIC इंफॉर्मेशन, तो आप उसको कहेंगे कि इसको एक्सपोर्ट में शिकागो भेजना है, ऑस्ट्रेलिया भेजना है, या यूरोप भेजना है, या सिंगापुर, या कहीं भी अफ्रीका या मिडल ईस्ट, तो आप उनको कहेंगे कि ये 400 या 4000 या 40,000 रुपए की चीज जो है, ये एक सिंगल यूनिट बाहर एज एक्सपोर्ट जाना है, तो वो आपको एज एन एक्सपोर्टर रजिस्टर करेंगे और आपकी वो चीज बाहर चली जाएगी मुल्क से एज एन एक्सपोर्टर। उसके अगेंस्ट जो पैसे आएंगे उसकी वजह से आप एक्सपोर्टर डिक्लेयर होंगे एज अ स्मॉल पैकेट माइक्रो एक्सपोर्टर, और यू कैन टेक बेनिफिट एज एन एक्सपोर्टर, यानी कि उस पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर आपको बैंक लोन देता है एट अ डिस्काउंटेड रेट फर्दर, वगैरह वगैरह। सो अब आप सोचें कि जो पहले सिर्फ एक कंटेनर में चीजें जाती थी वो एक्सपोर्टर थे, अब एनी इंडिविजुअल कैन बिकम एन एक्सपोर्टर एज वेल। सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट, इसी तरह तो जरूर पढ़िएगा B2C क्रॉस बॉर्डर फ्रेमवर्क ई कॉमर्स का। और दूसरा जो अभी रिसेंटली हम जिस पे डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड B2B2C ई कॉमर्स फ्रेमवर्क। B2B2C ई कॉमर्स फ्रेमवर्क, पहला B2C था खाली, ये B2B2C इसलिए है, दिस इज बेस्ड एंड इज सपोर्टिंग द न्यू Amazon एंट्री इनटू पाकिस्तान। आपने सुना होगा Amazon पाकिस्तान में आ रहा है, तो उसके हिसाब से आपको फर्दर रेगुलेशंस को चेंज करना है। बहुत सारे ऐसे रेगुलेशंस है जिनकी वजह से Amazon के आने के बावजूद आप यहाँ से Amazon के साथ काम नहीं कर सकते थे, तो उन पे भी अगेन हमने रिकमेंडेशन, मैं सिर्फ इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि आप जब समझते हैं डिजिटल को, कहना बड़ा आसान है कि Amazon वहाँ एंट्री डाल दे और पाकिस्तान लिस्ट में आ जाए, the business does not really start happening right away instantly. There's a lot to be done in the background, ताकि businesses जो हैं वो facilitate हो सकें और वो genuinely online काम कर सकें। Last thing and then we'll open up to questions. So just to give you the context कि internet कैसे evolve किया है over the years. So just to put things in context for you, so think of this as कि web के 3 versions हैं, web 1.0, web 2.0 and web 3.0. Web 1 जो था, जो शायद I mean that's where I started off as learning everything, was very informational.
It was one way broadcast. यानी Yahoo होता था, इत्तेफाक को शायद याद हो, Yahoo था, Alta Vista था. It was very informational, and we could only consume information one way. Web 2.0 was very interactive. The Facebooks, the Twitters of the time, and MySpace and Friendsters and all of those. Orkut hota tha, I don't know किसी को अगर याद है कि नहीं कभी. So those were the interactive times of the start of the interactive web. And now the internet is transactional. अब आप genuinely कोई product चीज खरीद सकते हैं, भेज सकते हैं, बेच सकते हैं, और आप transaction कर सकते हैं. So informational, interactive, and transactional, just to put things into buckets, right buckets. So this is how the internet has evolved. And remember, selling and buying is not only for goods, it is for services as well. So when you order an Uber or a Careem, the discovery of that service is online, even if you pay cash by after the ride. So that's a COD transaction, but the discovery is digital. So it's a little complex के model में. And from a marketing perspective, I'll add one thing कि जब भी आप किसी चीज को buckets में डालना चाहें digital में, तो think of a framework called POEM. Paid, owned, earned, media. Paid, owned, earned, media. So there are three types of media: paid, owned, and earned. And the owned is the most important one. So owned assets are your real virtual assets. बाकी सब जो earned और paid है, वो they're all third party. So your owned assets, like your own website, your own mobile app, brand key, is what you own, and you control the policies, the user experience, the data, and everything there. Versus on any third party platform like the Facebook or Twitter, they're not owned assets; they're your earned or paid assets. So just wanted to put from a marketing perspective things in context. I'm open to any thoughts, and Aisha, I'm sorry, I'm not following any comments. Happy to, if you could just help me. Thank you so much, Badar. मैं इतना कुछ सीखने को मिला है ना मुझे. मैं खुद बिल्कुल भी I'm a tech newbie कह लो, tech बिल्कुल amateur, बिल्कुल नहीं मुझे पता tech के बारे में. मैं इनफैक्ट डरती हूँ. जैसे बच्चे कुछ होते हैं ना मैथ से डरते हैं, तो मैं टेक्नोलॉजी की बातें सुनने से ना भी मुझे थोड़ा सा वो होता है. लेकिन you made things very simple. I felt like a student myself. मैं ये सोच रही थी कि जब sorry, ये जो आपने बात की, this is important. Sorry, interrupt कर रहा हूँ, but just for everyone's knowledge, ये जो knowledge है, ये मेरे पास भी किसी के पास भी up to date नहीं है. I'll be very honest. Everyone is learning. I myself am learning. So, and just to learn further, I also teach just so that मैं भी सीख सकूं. Because जब आप share करते हैं, तो आप learn भी कर रहे होते हैं. So this is an ongoing process. और इसके लिए मैं एक request करूँगा हर किसी से. मेरा इस पे एक बहुत strong belief है कि everyone should have the ability to unlearn and relearn. So don't stop learning. Do short courses, learn from others, learn from peers. So that's critical. Sorry, Itfaq, please. नहीं बस मैं यही बिल्कुल सही बात की है. लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग, किसी पॉइंट पे स्टॉप नहीं होती. देयर वाज अ टाइम व्हेन आई फेल्ट के आई नो अ लॉट बिकॉज़ जी मैं एडवर्टाइजिंग में बाहर से पढ़कर आ गई हूँ सारा कुछ, बट देन आई कम हियर और जिस तरह से दुनिया ट्रांसफॉर्म हुई है, आई फील लाइक आई डोंट नो नथिंग. एंड ये बच्चे जो हैं ये मुझसे ज्यादा, दीज डिजिटल नेटिव्स, दे आर इन फैक्ट एट टाइम्स आई कॉल देम टू प्रेजेंट इन क्लास कि यार ये मुझे नहीं पता, मुझे बताओ कि ये कैसे होता है. तो ये चीज तो बड़ी जरूरी है कि हम एक्सेप्ट भी करें कि हमारी नॉलेज इनफैक्ट ऑब्सोलीट हो जाती है कभी कभी, जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है. सो मैं तो भाई बड़ी ओपनली एक्सेप्ट करती हूँ, एंड आई एम ओपन टू लर्निंग फ्रॉम एवरीबडी एंड एनीबडी, चाहे वो मेरा स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो. ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए इंसान को. एंड देन हाउ वी स्टार्टेड, लाइक बैक देन व्हेन यू स्टार्टेड इन टेक्नोलॉजी, तब कितनी एक्सपेरिमेंटेशन और कितने मतलब हासिल होता था, बिकॉज इट वाज देयर वाज नथिंग ना, हम शुरू कर रहे थे उस टाइम पे. So इन बच्चों के पास there's so many tools and platforms and so much technology that they already have at their disposal. I think they should make the most of it. Virtual learning, I definitely इनको इतना encourage करते हैं हम लोग के virtual, there's so many courses available for you. YouTube पे हर चीज का tutorial है. There should be no reason to not learn and grow. साथ में मैं अच्छा सॉरी मैं भूल गई, मिस सारा चुगताई जो हमारी करियर सर्विसेज की जो हेड हैं, शी हैज आल्सो जॉइंड द मीटिंग. सो वेलकम सारा. शी इज इन कराची फिलहाल हमारे इंडस्ट्री लिंक्स के लिए जॉब फेयर से रिलेटेड, उसमें वी आर हैविंग वन ऑफ द बिगेस्ट वर्चुअल जॉब फेयर्स we've ever had. So I hope Bremers can also join us at the job fair. It's going to be very different for हमारे पहली दफा हमारा वर्चुअली होगा.
So ऐसे देखें जी सब कुछ बदल गया. Virtually we can consider, but generally I have a different opinion on that. But anyway, हम किसी job fair पे जाते नहीं हैं. I'll be very honest. So that has also changed, transformed, and we need to transform. So digital transformation खाली marketing की तरफ नहीं हो रही है. It is actually happening in every perspective as well. So I think that's another interesting thing we should certainly consider. But एक और चीज जो अभी आपने की कि बच्चों के पास बहुत सारे information है, but एक चीज I think everyone must recognize as well कि इंफॉर्मेशन बहुत है, उस इंफॉर्मेशन को किसी ने नॉलेज और नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट करना है, वो हर कोई नहीं कर सकता, और वो जो है वो एक्सपीरियंस से आता है. सो देयर इज नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस. सो जो आपका एक्सपीरियंस है, हो सकता है मेरे और आपके पास ऑफ कोर्स उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट आई थिंक दैट्स वेयर अ बिट ऑफ आवर एक्सपीरियंस काउंट्स वर्सेस एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन. सो फिक्र ना करें, आप इतनी टेंशन नहीं, आप आई मीन यू आर स्टिल far ahead of your students. So mentoring का बड़ा रोल है इस सब में. I think they find the right mentors or they're set for life. Yeah, on that note, I would say hello to you, and I'm very sorry for not being able to take your call. I was actually traveling, and yeah, so as Ms. Irtafa has already informed you, I'm in Karachi. So yeah, therefore I was unable to take your call. But thank you so much for joining, and thank you so much for informing. And yes, that's very true. That we are new to all this, and every day everything is evolving and we are learning, and that's very true. The technology, koi claim nahi kar sakta that they know at their fullest. So that's very true. But thank you so much once again, and I believe I will leave it to Ms. Irtafa to continue that. And we are very thankful for you coming and talking to our students. On the note of B-fairs, I'll be talking separately with you, not here. But and yeah, and I'll be convincing you separately. That's my job, and I'll do that. But thank you so much, Ms. Irtafa, for introducing me and for giving me a time to speak. And over to you, and please continue with the questions, and please continue with the wonderful session. I'm really enjoying this. Thank you. Thank you so much. I'll ask Aisha Haroon, who's been amazing, who's actually the person who got you to speak to us. So मैं तो बहुत खुश हूँ. I'm very proud of Aisha that she was able to get a response, a positive response from you. And Aisha has maybe, I think उसने सारे questions थोड़े से filter भी कर लिए हैं, shortlist भी कर लिए हैं. So I think we'll let her moderate the Q&A. Karan ji, rapid fire session. I'm so honored to be speaking to you, Mr. Badar. And I would, firstly, I would appreciate your role in Pakistan being added to Amazon's seller list. So I wanted to ask, what's your advice to startups and individuals who want to benefit from this opportunity? जी, thanks so much, Aisha. मेरा तो बहुत छोटा सा रोल था इसमें, but Amazon coming to Pakistan is certainly extremely good, because not only because कि Amazon पे लोग अब काम कर सकें, but more importantly जब बड़ा brand कहीं जाता है तो बहुत सारे छोटे brand follow करते हैं, and I think that would help Pakistan improve its PR, its brand image globally. I think that is to me a bigger win than just trying to do business on Amazon. So उसके लिए उससे पहले मैं एक और चीज ऐड कर दूं. For all of you, I would strongly recommend 2-3 certifications. अगर आप सिर्फ if you just want to get a sense of digital in some perspective, एक है Google Digital Garage. I'm not sure how many of you have done them, but Google Digital Garage, it is a great online free resource. I would strongly recommend everyone. दूसरा is Facebook Blueprint certification. So ये Facebook की official है, Facebook Blueprint, जो Facebook की advertising की side से है. इन दोनों से पहले एक जो मैं, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, अगर एक सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, the one I would recommend, that one would be Google Analytics Academy. Google Analytics Academy, strongly recommended for everyone. फिर Google Digital Garage, फिर Facebook Blueprint, और अगर किसी को बहुत शौक है, टाइम है, एफर्ट करना चाह रहा है, then HubSpot की inbound certifications. HubSpot inbound certifications. So in 3-4 करने से ना आपको ecosystem और how the web works, how the digital ecosystem, digital marketing का पूरा क्या है, you'll get a good sense. और ना सिर्फ ये, more importantly, this will add a kind of literally a star to your CV, ताकि जब आप लोग कल को कहीं जाएंगे तो आप लोग digitally ready होंगे. I think that's important.
कमिंग बैक टू अमेजोन पे आई वुड रिकमेंड आयशा कि अमेजोन की अपनी जो सबसे पहले ऑफिशियल ट्रेनिंग है दैट इज कॉल्ड अमेजोन सेलर यूनिवर्सिटी. सो इससे पहले कि आप लोग कुछ भी करें, सर्च फॉर अमेजोन सेलर यूनिवर्सिटी जो ऑफिशियल उनकी है. गो एंड टेक ऑल द कोर्सेज, ऑल द वीडियोज और नोट्स लें, खाली देखें नहीं, सुने नहीं, टेक ऑल द नोट्स. जब आप ये कर लें तो उसके बाद उर्दू में 2-3 कंपनियों ने पाकिस्तान में ये ट्रेनिंग्स लोकलाइज भी कर दी हैं खुद ही अपने तौर पे, नॉट एफिलिएटेड विद अमेजोन इन एनी वे, बट उनमें एक एक्सट्रीम कॉमर्स हैं, एक इनेबलर्स हैं, एक और हैं, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, ECPICS समथिंग नाम है उनका. सो 2-4 लोगों ने की हुई हैं. और जिस तरह एक्सट्रीम कॉमर्स का ऑनलाइन प्रोग्राम है, उसका नाम है वर्चुअल बूट कैंप, VBC. आई थिंक वो स्टूडेंट्स के लिए फ्री भी है. यू माइट जस्ट वांट टू गो टू देयर वेबसाइट एंड अप्लाई फॉर इट. तो मेरा कहने का मकसद ये कि खाली कोई एक ट्रेनिंग ना लें, मल्टीपल ट्रेनिंग्स लें एक ही टॉपिक पे, एंड देन लर्न फ्रॉम ऑल दोज एंड ट्राई टू फिगर आउट कि क्या चीज़ एथिकल है, क्या गलत है, क्या नहीं है. क्योंकि याद रखें इसमें बहुत सारे ऑनलाइन कंटेंट में आपको ऑथेंटिसिटी और एथिकल जरूरी नहीं कि हर चीज़ मिल जाए. सो बी केयरफुल, मेक श्योर कि आप क्रॉस चेक करें कि क्या ये जो मैं टैक्टिक इस्तेमाल करने लगी हूँ या करने लगा हूँ, क्या ये सही है, अप्रूव्ड है एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अमेजोन, या उनके पार्टनर्स के लिए अलाउड है ये करना या नहीं करना. तो ये जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारी है जब हम ये कर रहे हों. क्योंकि अगर कल को किसी के अकाउंट्स ब्लॉक होंगे तो अमेजोन आपको ये नहीं कहेगा कि अच्छा आपको किसी और ने बताया था तो आपकी मतलब ठीक है मैं आपको ओपन कर देता हूँ. they'll be super strict about it. So I would strongly recommend Amazon Seller University. और फिर बाद में जो ऑनलाइन लोकल मैंने आपको बताया अवेलेबल हैं ट्रेनिंग्स, वहां से शुरू करें, एक्सपेरिमेंट करें, और उसके बाद ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में अपनी सर्विसेज दें सो दैट आप हैंड्स ऑन जरा हाथ साफ कर सकें कि यार अच्छा मैंने सीख तो लिया है, लेट मी लर्न. तो यही सर्विस मैं ऑनलाइन फ्रीलांस करके देखता हूँ या देखती हूँ और लोगों को सर्विस देती हूँ. अच्छा कंटेंट अगर किसी ने सीख लिया तो कंटेंट की वो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग दैट विल वैलिडेट कि आपकी लर्निंग ठीक हो गई है, आपने सीख लिया है, लोग आपको पैसे देने को तैयार हैं उस काम के लिए, and then start growing it slowly and gradually. But that's what I would recommend for Amazon. Talking about freelancing, in your TED talk 9 years ago, you talked about that most of the foreign revenue goes unrecorded, which is coming through freelancing. So what's your stance on it now? How has it improved? पता नहीं आपका FC कॉलेज का तो पता नहीं, आप मुझे जरूर बंद कराएंगी, बट so things have changed a lot. I think the most important thing is कि इस वक्त जो हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक जमाने में I mean just to give you an example, वो एक जमाने में बड़े मशहूर थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फेसबुक, जब तक वो इलेक्ट नहीं हुए. और फिर जब वो इलेक्ट हो गए तो फिर पता चला कि अच्छा डिजिटल तो इतना इंपॉर्टेंट है, तो बाकी पार्टीज ने भी अपना डिजिटल विंग्स बनाए और सोशल पे एक्टिव होना शुरू हुए. एंड आई एम नॉट टेकिंग एनी साइड्स, आई एम जस्ट सेइंग कि एवोल्यूशन हुआ डिजिटल का पॉलिटिक्स वाली साइड पे भी. और हमने ये भी यहाँ भी देखा, अमेरिका में भी देखा, वहाँ मिसयूज भी हुआ, कैसे वो एक पूरा केस बना उस पर कि कैसे उन्होंने मिसयूज किया, उस पर अब्यूज किया. बट एनीवे कमिंग बैक टू पाकिस्तान, तो so this government, by the way, इससे पिछली गवर्नमेंट में भी और इस गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा recognition है कि digital is critical and can be a kind of a catalyst for change in a better way. But remember, हमारे systems जो हैं वो बहुत archaic और बहुत bureaucratic हैं, बहुत पुराने हैं, बहुत old school हैं, और उसकी वजह से change लाने में time लगता है, कोई भी change लाने में. So just to give you an example, जिस तरह मैंने भी आपको बताया था कि हमने एक इंटरवेंशन स्टेट बैंक के साथ की जिसमें B2C क्रॉस बॉर्डर का मैंने आपको बताया ई-कॉमर्स की, इसी तरह फ्रेमवर्क जो बनाया, इसी तरह उससे पहले सबसे पहले ही जो ई-कॉमर्स पॉलिसी बनने के बाद ई-कॉमर्स काउंसिल है, एक नेशनल ई-कॉमर्स काउंसिल बनी. उस ई-कॉमर्स काउंसिल की पहली मीटिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ डायरेक्टली हुई. दिस इज लाइक January 2020, जस्ट बिफोर कोविड. और उसके अंदर वी हैड अ कन्वर्सेशन विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द पब्लिक सेक्टर स्टेक होल्डर, स्टेट बैंक वगैरह के साथ, कि जी जो इनबाउंड फ्रीलांसर्स के पैसे आते हैं उसकी लिमिट थोड़ी है. अब लोगों को बड़े प्रोजेक्ट मिल जाते हैं तो आपको लिमिट इंक्रीज करनी चाहिए, वरना लोग क्या करें, जो अर्न ज्यादा कर रहे हैं वो पैसे बाहर रख रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं कि फिर हम नेक्स्ट मंथ में या फॉलोइंग मंथ्स में लेकर आएंगे. तो हमें तो डॉलर चाहिए. उस वक्त आपको याद होगा एक टाइम पर खान साहब कह भी रहते हैं हमें डॉलर चाहिए मुल्क में ताकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है वो ठीक हो सके. तो ही रिकग्नाइज द फैक्ट
उन्होंने उसी वक्त स्टेट बैंक को कहा कि लिमिट बढ़ा दी जाए, और अब इस वक्त $25,000 पर मंथ लिमिट है फ्रीलांसर्स के बाहर से पैसे आने की। पहले ये $5,000 थी, सो 5x मल्टीप्लाई की प्राइम मिनिस्टर ने इन दैट मीटिंग राइट अवे इंस्टेंटली। स्टेट बैंक ने 2 वीक्स के अंदर उसकी नोटिफिकेशन जारी की, ऑनलाइन स्टेट बैंक की वेबसाइट पे है। आई वुड अगेन encourage everyone to read and study about it कि इसकी लिमिट का फर्क क्या है। इनको इसमें फर्क ये है कि सबसे क्विकली बता देता हूँ कि इसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन सबसे कम चाहिए। इससे ऊपर आप पैसे ला सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, बट उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, जिसकी जो रिक्वायरमेंट, जिसकी वजह से हम FATF की ग्रे लिस्ट की डिस्कशन भी करते हैं। आपने खबरों में सुना होगा FATF का बड़ा चलता है, इज बिकॉज के वो ट्रांसपेरेंसी और ट्रेसेबिलिटी ऑफ फंड्स चाहते हैं कि जो बाहर से पैसे आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है। तो सो दिस इज समथिंग ऑफ अ कंसर्न एज वेल। बट एनीवे, फ्रीलांसर्स की इस वक्त $25,000 की अब लिमिट है पर मंथ लाने की। अब बहुत सारे लोग प्रॉपर्ली ला रहे हैं। पेयोनियर पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, उनके ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ, तो दे वर्क क्लोजली विद द रेलेवेंट अथॉरिटीज एंड स्टेक होल्डर्स, तो इसलिए वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड आ रहा है। और अगर अब आप देखें तो कुछ बैंक्स लोकली, स्पेशली फैसल बैंक और अल्फला या कोई, वो पेयोनियर से भी कनेक्टेड हैं। तो जो बाहर से आप अर्न करते हैं अपवर्क या फ्रीलांसर से, वो पहले पेयोनियर फनल करता है इनटू पाकिस्तान लीगली, फिर पेयोनियर से वो आपको फनल कर देते हैं आपके फैसल बैंक या आई थिंक अल्फला या 2-3 जो भी जैज कैश, आई थिंक 2-3 जगहों पे वो further connected, so eventually they land into your local bank account. So that, since that money is all traceable and it's white money because वो सब traceable है और वो local आ रहा है, तो काफी हद तक traceability आ गई है। अभी भी बहुत सारे लोग document नहीं करते अपनी earnings, but remember जो document नहीं कर रहा वो locally अपनी wealth को create भी नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि जब वो कल को कोई घर खरीदने जाएगा या गाड़ी खरीदने जाएगा और वो कहेगा मेरे पास पैसे हैं, तो हुकूमत उसे पूछेगी भाई आपने टैक्स नहीं दिया हुआ इतने सालों से, तो ये पैसे कहाँ से आए हैं, जो सोर्स ऑफ इनकम, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को फिर कई दफा आपने देखा एमनेस्टी स्कीम लगानी पड़ती है कि जिन्होंने पैसे डिक्लेयर नहीं किए वो डिक्लेयर भी करने अपने, जिन्होंने अक्रू कर लिए बट डिक्लेयर नहीं किया। सो दोज आर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, बट सर्टनली थिंग्स हैव रियली इम्प्रूव्ड एंड दे आर ऑन द राइट ट्रैक। कुछ चीजों में चैलेंजेस आते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज वो हमारी टैक्स अथॉरिटीज हैं। दे स्टिल नीड टू रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड कि डिजिटल इकोसिस्टम को ग्रो करना पड़ेगा, उसको ग्रो होने देना चाहिए, एकदम टैक्स नहीं करना, एकदम उनको नेसेंट स्टेज पे रोकना नहीं है, ताकि इकोसिस्टम बढ़ेगा, पाई साइज बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली टैक्स बेस भी बढ़ेगी बिकॉज डिजिटाइजेशन होगी। बट आई थिंक वहां भी थोड़ा सा ये गैप है, तो वी नीड टू इम्प्रूव इट देयर। When it comes to running campaigns on digital media, do you believe in testing first or market research? Of course, eat the elephant bit by bit. So you need to certainly do a small test. So it's start small, grow big. It's a simple concept always. There's no brainer to it. So there's no confusion. Absolutely. और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, खाली मतलब छोटा एक दफा शुरू करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इज वेरी इनहेरेंट टू डिजिटल। डिजिटल में अगर आपसे गलती हो भी गई है, बल्कि आई वुड से द न्यू अनटोल्ड और द अनरिटन वर्ल्ड ऑर्डर व्हाटएवर is okay अगर आपसे गलती भी होगी, और if you accept it and if you improve it, that's absolutely fine. आपने शायद देखा होगा वो टेस्ला की जब ट्रक भी लॉन्च करते हैं और शीशा टूट जाता है, it's okay. I mean there are challenges. वो रॉकेट्स लॉन्च करते हैं, रॉकेट नहीं चलता, फेल हो जाता है, that's okay. But you keep trying and you keep improving. So that's the same idea on digital as well. You keep trying but you learn from your mistake, last mistake जो भी की थी. That's important. Otherwise iteration का भी फायदा नहीं है। So I'm also working on an early stage startup. So I really wanted to ask, how can early stage startups benefit from digital media or social media for getting आयशा, there? हाँ बिल्कुल आयशा, इसमें तो कोई सेकंड ओपिनियन ही नहीं है। लेकिन स्टार्टअप तो सबसे पहले, स्टार्टअप का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो लिमिटेड फंड्स होते हैं। सो यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्सेज भी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी, एवरीथिंग इज लिमिटेड विद इन अ स्टार्टअप। और आपने एक्सपेरिमेंट करके अपना सबसे पहले जो अचीव करना है वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, या जिसको हम प्रोडक्ट मार्केट फिट कहते हैं। सो आइडिया स्टेज से, आइडिएशन से आपने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और इस तरफ जाना है। तो उसके लिए तो डिजिटल से आसान कोई चीज ही नहीं है, डिजिटल से सस्ती कोई चीज नहीं है, डिजिटल से तेज कोई चीज नहीं है। पहली बात, आसान है, सस्ती है, तेज है। सो देयर इज नो बेटर वे टू वैलिडेट योर आइडिया। हाउएवर रिमेंबर कि कुछ चीजें, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ऐसी चीज बनाई है जो कि एज 40 एंड अबव के लिए है, तो फिर
you need to really consider कि आपका mix सही होना जरूरी है, hybrid होना जरूरी है. खाली digital won't work because उस age से ऊपर वाले लोग सारे पूरी तरह digital नहीं है. So anything which is for the age group which is 18 to 25 or up to 25 age group, I think digital is safely the best, I would say, platform to kick off and experiment with. But anything which is for anyone who's above 40, I think digital can be a very good kind of a hybrid resource. But आपको साथ साथ बाकी opportunities भी देखनी होंगी offline. क्या आपने करना है, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो कोई भी एंगल से आप देख लें. अगर मार्केटिंग है तो ऑफ कोर्स आपको फिर ATL, BTL, एक्टिवेशंस, उन सबको भी जरूर कंसिडर करना है, बिकॉज वो लोग डिजिटल इमिग्रेंट्स हैं 40 एंड अबव वाले. फॉर 25 एंड बिलो आर ऑल डिजिटल नेटिव्स. तो वहाँ डिजिटल पे खाली रहना इट्स ओके. सो यू नीड टू रियली नो, जिसको हम कहते हैं, आई एम श्योर आप सबने मार्केटिंग पढ़ा होगा, व्हिच इज कॉल्ड segmentation and targeting. So it's the step part, it's the segmentation plus targeting is equal to positioning. So you need to really know कि आपका target audience कौन है. अगर आप वो पहले identify सही कर लेंगे अपनी customer base audience, फिर आप अपना tactic define कर सकते हैं, the little m of marketing, कि आपने digital करना है या hybrid करना है या non-digital करना है. So that can be defined. So totally depends कि आपका step में आपका target audience कौन है. I don't know if I'm talking French for everyone. अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो feel free to. नहीं, सब ठीक है, I guess. हाँ, सब खामोश हैं इसलिए ठीक है. अच्छा, by the way, sorry, वो इरफा, if you may allow, I'm open to even having people unmute and have quick questions. I'm absolutely fine. कोई बात नहीं, किसी का connection ठीक नहीं होगा, we'll mute them. I'm absolutely fine. I think that's the beauty of digital. So in addition to I'm absolutely fine. So in addition to the questions जो आयशा ने curate कर ली हैं, उसके अलावा भी I'm happy to take any few other questions live as well. Hamad, if you wanted to ask your question yourself, तुम्हारे ऊपर question, I've seen some people who've sent in questions. Sorry, मैंने बिल्कुल comments का section ही देखा, इसलिए please I hope कि आप it's very difficult to. Yes ma'am, आवाज सही आ रही है? बेहतरीन, बताइए. Yes sir, सर मेरा question ये था कि जो cash on delivery है, वो सबसे बड़ा इशू है कि कैश जल्दी डिलीवर नहीं होता ब्रांड्स की तरफ. सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या वेज हैं कि कैश ऑन डिलीवरी से आप ट्रांसफर कर दें ऑनलाइन पेमेंट्स की तरफ ब्रांड को? व्हाट आर द वेज? गुड क्वेश्चन हमारा, एक्सीलेंट क्वेश्चन. सो मैंने सॉरी आप लोगों को प्रेजेंटेशन वगैरह कोई नहीं दिखाई आज, बट क्विकली स्पीकिंग यू नीड जब सो एज ए गुड एंटरप्रेन्योर, एंड आयशा दिस गोज बैक टू योर स्टार्टअप पॉइंट एज वेल, एज ए गुड एंटरप्रेन्योर एंड एज एन एजुकेटेड आई वुड से यंग डिजिटल नेटिव, याद रखें कि try to go beyond the basics, try to go behind the scenes as well, कि हो क्या रहा है, why is this happening. So just FYI, and you guys can go and validate these numbers, Pakistan में total banked economy is less than 20%. यानी 100 हम कितना 100 million 200 million कहते हैं population, 200 million में से सिर्फ 20% के पास बैंक अकाउंट है. 80% ने तो आज तक बैंक अकाउंट ही नहीं खोला. इन 20% में वो लोग भी हैं जिन्होंने खोल के कभी यूज नहीं किया. इनमें वो भी हैं जिनके मेरी तरह के 4 या 5 अकाउंट भी हैं. तो इट्स प्रैक्टिकली आई वुड से 10 to 15% एक्टिव होंगे जो जेन्युइनली यूनिक बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं. सो जस्ट थिंक ऑफ इट. अब आप कह रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स, अगर आपके 90% पॉपुलेशन या 85% पॉपुलेशन ने कभी बैंक अकाउंट ही नहीं खोला, दिस इंक्लूड्स बाय द वे मोबाइल वॉलेट्स, कभी किसी ने खोला ही नहीं है, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करें, वो डिजिटल पेमेंट्स कहां से करेंगे? Why? And then you need to go back, वो क्यों नहीं कर रहा है? So सबसे पहली बात, एक परसेप्शन बिल्ड हो गई हुई है कि हमने आज बैंक में जाके काम किया तो कल टैक्स वाले आ जाएंगे. तो छोटा ताजिर, छोटे बिजनेसेस आर हेजिटेंट. वो कहते हैं यार कोई बात नहीं, थोड़े कमा लो, इधर उधर कर लो, जो मर्जी करो, बट बेहतर है कि ना जाओ. एक दफा चले गए बैंक में तो ट्रैप में आ जाओगे. I don't know, wrong, right or wrong, मुझे आइडिया नहीं, but I think that's one perception which I see in the market. The other is a religious factor as well, कि ये हलाल है, हराम है, बैंकिंग नहीं है, क्या है, सही है, गलत है. तो वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है, हम क्लैरिटी नहीं है. और इस्लामिक बैंकिंग पे भी लोगों के ओपिनियंस जो हैं वो डिफरेंट हैं. एज अ मुस्लिम डोमिनेंट कंट्री वो भी उनके हैं कि सही है या गलत है, हमने कान को उधर से पकड़ा हुआ है, जो भी है. तो इन दोनों परसेप्शंस एंड मे बी देयर आर फ्यू अदर्स एज वेल, लोग बैंक इकोनॉमी में ही नहीं है. जब बैंक इकोनॉमी में नहीं है तो COD से डिजिटल पेमेंट पे जा ही नहीं सकते आप, बिकॉज लोगों के पास क्रेडिट कार्ड ही नहीं है. सो ओनली 1% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन हैज अ क्रेडिट कार्ड. 1%.
ये याद रखें इसमें वो क्रेडिट कार्ड भी इंक्लूड है जिसमें लोगों ने फोन करके अपने क्रेडिट कार्ड कंपनी को कहना होता है, बैंक को, कि भाई खोल दो, मैंने कुछ ऑनलाइन लेना है, फिर बंद भी कर दो। तो सो इनकन्वीनियंट, ठीक है। सो याद रखें डिजिटल पेमेंट्स कब होंगी एक्टिव एंड प्रोमोट होंगी बहुत ज्यादा, जब कैश विल बी मोर एक्सपेंसिव टू ट्रांजैक्ट। अभी डिजिटल पेमेंट्स आर मोर एक्सपेंसिव टू ट्रांजैक्ट। कैश आसान है, मैं आपको 100 रुपए दूं, आप आयशा को दें, आयशा इत्तफा को दें, वो सारा को दें, सारा वापस मुझे दें, तो 100 रुपए का नोट 100 रुपए रहेगा। मगर अगर मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफर करूं पैसे, आप इत्तफा को करें, आयशा को करें, तो सारा को करें, मेरे पास वापस आते आते शायद वो 88 रुपीज या आई डोंट नो 92 व्हाटएवर, बट 100 नहीं रहेगा वो, क्योंकि बैंक ट्रांजैक्शन, टैक्स, फलान टिमकान जो भी है वो पैसे कट जाएंगे। जबकि डिजिटल शुड बी चीपर, आई शुड बी encouraged टू ट्रांजैक्ट डिजिटली। सो अगेन दिस इज अ पॉलिसी चैलेंज राइट नाउ कि अगर डिजिटल महंगा होगा तो फिर लोग क्यों कैश नहीं इस्तेमाल करेंगे? कैश इज चीपर टू ट्रांजैक्ट and hence people prefer COD. And third point जिसकी वजह से e-commerce में बहुत ज़्यादा कैश है is because लोगों को ट्रस्ट नहीं है कि जो मुझे मर्चेंट चीज भेज रहा है, जो मैंने ऑर्डर किया है, वो सही भी आएगा कि नहीं आएगा। अगर सही ना आया तो मैं कहाँ जाके रहूंगा, किस कोर्ट में जाऊंगा? कौन सी कंज्यूमर कोर्ट है जो मुझे एक दिन में 24 घंटे में या 48 घंटे में मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी और जाए बगैर ऑनलाइन हो जाएगा? तो उस बात की खिचखिच से बचने के लिए लोग कहते हैं बेहतर है COD हो, मैं चीज आ जाए, देखूं, फिर मैं पैसे दूं। So there is a kind of a I would say absence of trust between merchant and the consumer, और consumer courts का उसमें एक important role है। तो वो एक अभी they're trying to fix it as well. So there दो तीन reasons हैं जिसकी वजह से digital payments की adoption, especially in e-commerce, is very low compared to COD. So it is not a technical issue, it is less of a technical issue. यानी ये नहीं है कि किसी ने पेमेंट गेटवे नहीं है या वो, मतलब दे आर देयर, बट इट्स जस्ट दैट। और एक और मसला है, क्रेडिट कार्ड आपने इस्तेमाल किया, कल को हैक हो गया और तो बैंक क्या करिए, आपकी जिम्मेदारी। बाहर दीज आर ऑल इंश्योर्ड ट्रांजैक्शंस, यहाँ वो भी एक चैलेंज है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस जिसकी वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि और अगर आपकी क्रेडिट कार्ड में आ भी गया कोई फ्रॉड और आपने बैंक को क्लेम भी कर सकते हुए, तो प्रोसेस इतना कम्बरसम है कि आप कहेंगे उससे बेहतर मेरी तौबा, मैं अगली दफा से कैश ही करूँ, क्योंकि बार बार बैंक को एप्लीकेशंस देना, उनको फॉलो अप करना, कॉल सेंटर से जवाब लेना, it becomes your responsibility and not bank's responsibility to reimburse you if there was a fraud, and hence it becomes a challenge. So again, it's very friction oriented. There's a lot of friction in the transactions. You lose actual value because it's not cheaper than cash. So there are other reasons. और पे trust का issue भी है. So several reasons जिसकी वजह से हम digital payments की तरफ नहीं है e-commerce में। I don't know, sorry मैंने बड़ा लंबा जवाब दिया आपके सवाल का। नहीं, बहुत रेलेवेंट सवाल था और जवाब बहुत रेलेवेंट था, क्योंकि a lot of our students are do run small businesses और क्या कहते हैं entrepreneurial minded हैं, बहुत हमारे बच्चों का रुझान इस तरफ है, तो this is something very relevant। मैं एक और चीज सोच रही थी, a lot of small businesses don't want to use digital mediums या do not want to document their transactions because उनको लगता है कि एक दफा डॉक्यूमेंट हो गया तो फिर हम नजर में आ जाएंगे, फिर हम टैक्स नेट में आ जाएंगे, फिर हमको रजिस्टर कराना पड़ेगा, फिर ये मसला होगा, फिर वो मसला होगा। इसलिए हम जो है वो अंडर द रडार काम करते रहे, हमारे मार्जिन्स जो है उसमें कुछ बाइट ना करे। एक ये भी एक माइंडसेट जो है ना, जिसकी वजह से दे जस्ट ये एक रीजन है, there's another reason which is a digital immigrant problem. उनको पता है कुछ डिजिटल में करना चाहिए। It's actually a very good question as well. उनको पता है डिजिटल में कुछ करना चाहिए, and with all due respect मैं आंसर जो भी दूंगा प्लीज nobody should mind it, मैं गलत सेंस में नहीं, मैं प्रैक्टिकल फैक्चुअल आंसर देना चाह रहा हूँ। दूसरा एक रीजन ये है कि मेजॉरिटी स्मॉल बिजनेसेस जो है ना, वो ये कहते हैं कि अच्छा वो मेरे भतीजे ने, भांजे ने, बेटे ने, किसी ने जो है ना वो आईटी में कर लिया ग्रेजुएट, अब मेरा सारा आईटी का काम वो कर देगा। ये इसी तरह आप जिस तरह ये कहें कि मेरे भांजे, भतीजे, बेटे, व्हाटएवर, किसी ने, बेटी ने भी, किसी ने भी आईटी में ग्रेजुएट कर लिया, जो डॉक्टर बन गई है, तो अब वो हड्डियों का इलाज भी वही करेगी, मेरी आंखों का इलाज भी वही करेगी, मेरी हर चीज। Even if you're an MBBS, you can't really treat, you can't be an orthopedic, you can't be an ophthalmologist. These are all specialist jobs. मगर अभी ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आई है, एक बात। तो हमारे लोग जनरली कॉस्ट, इसको दूसरी बात वो कॉस्ट समझते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं समझते। वो समझते हैं वेबसाइट बनाना एज अ कॉस्ट, दे डोंट टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज अ माइंडसेट प्रॉब्लम। वी नीड टू रियलाइज कि डिजिटल इज एन इकोसिस्टम एंड वर्चुअल है, और इसमें इन्वेस्टमेंट करनी जरूरी है। हर चीज कॉस्ट नहीं है, पहले कुछ इन्वेस्ट करेंगे तो फिर जिस बिजनेस में फिर आपको रिटर्न आना शुरू होगा। और क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल लोगों से नहीं कराएंगे तो ऑटोमेटिकली फिर जाहिर है वही होगा। अगर आप जो नीम हकीम खतरा जान वाला मसला है कि वो हड्डियों वाला डॉक्टर आंखों का इलाज करेगा, यानी कि ट्रेडिशनल आईटी टीम डिजिटल को देखेगी
तो वही होगा कि आंखों का इलाज प्लास्टर से तो नहीं हो सकता, नीड टू रियली गेट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो ये भी एक इशू है, उनको पता नहीं है कि कौन से लोग हैं जो सही काम किस काम के लिए हैं। तीसरा जो एक चैलेंज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी भी लोग कंसल्टिंग, एडवाइजरी या इन चीजों को समझते हैं ये तो फ्री होनी चाहिए, जब हम आपसे कोई काम कराएंगे तो फिर आप पैसे देंगे। दे डोंट रियलाइज यू आर इन द नॉलेज इकोनॉमी नाउ, it is the value of time you need to pay for, and the accumulation of knowledge which someone has done and is saving you few years or few months or few days by sharing that knowledge earlier with you. Otherwise आपको भी मिल जाएगा knowledge, आप भी ले सकते हैं, but YouTube पे सब कुछ available है, but it will take you some more time and there needs to be an investment to it. So consulting, advisory और वो पैसे नहीं, इसलिए SMEs अभी तक अपने आप को digitally transform नहीं कर पाए। These are few reasons जो मैंने observe किए हैं over a period of time, कि SME समझते हैं ये ना समझाने वाला काम और ये तो फ्री होना चाहिए। They don't realize कि जिस आप डॉक्टर को पैसे देते हैं, फीस देते हैं सिर्फ बात करने की, that's exactly how digital should be। वहाँ 15 मिनट के 3-4 हज़ार रुपए दे आते हैं, तो यहाँ भी उसी हिसाब से बिलिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, not the right people, they go to the wrong doctor for their digital problems, and thirdly वो mindset ये है कि हमने इसको cost समझना है, not an investment। So these are few reasons की वजह से SMEs जो हैं अभी तक अपने आप को transform नहीं कर पाए, although they are the backbone of the economy, and if we are able to transform them, they can really do wonders। जी sorry, do you think it's the language barrier that is the reason के लोगों को पता नहीं है कि किसके पास जाना है no, for certain no, services? not at all। TikTok इस्तेमाल कर लेते हैं ना सारे डाउनलोड करके, वहां तो लैंग्वेज किसी को याद नहीं आती कि मुझे प्रॉब्लम है, वो तो उर्दू में नहीं अभी तक बनी, मतलब it's the app is in English, someone has to download it and they are downloading it, I mean, and they are at the bottom of the pyramid mostly, it's not the language barrier at all। और शायद आप नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, बट शायद इत्तेफाक को याद हो, एक टाइम था पाकिस्तान में ना नेट टू फोन वगैरह बड़ा नया नया आया था, बड़ा वो नेट टेलीफोनी वाज लाइक अ प्रीमियम थिंग, तो बहुत सारे लोगों ने घरों में लगाई थी बिकॉज उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे थे, बट दे ऑल गॉट इट जस्ट बिकॉज दे न्यू कि उनके लिए इट्स अ चीपर ऑल्टरनेटिव देन अ PTCL कॉल अब्रॉड। तब मोबाइल्स भी नहीं थे अभी इतने, तो एंड हेंस पीपल स्टार्ट, तो इंटरनेशनल कॉल्स वर वैनिटी थिंग, अब तो इट्स व्हाट्सएप किसी को भी अब दुनिया में कभी भी कर लें, तो इट्स लाइक जीरो कॉस्ट, तब तो इट वाज अ प्रीमियम थिंग। तो मगर तब भी लोगों ने अक्वायर किया, अडॉप्ट की, एनीथिंग व्हिच हैज वैल्यू क्रिएशन फॉर एनीवन और कॉस्ट सेविंग फॉर समवन, दे विल लर्न इट। सो मैंने आपको बताया लोग डिजिटल पे आ जाएंगे कैश के बजाय, जो भी हमाद का क्वेश्चन था, मगर उनको ये वैल्यू समझ आनी चाहिए कि यहाँ सस्ता है, डिजिटल सस्ता है तो और आसान है, तो वो दे विल ऑटोमेटिकली। सो इसीलिए आई डोंट थिंक लैंग्वेज इज अ बैरियर पर्सनली। Also maybe we should work on communicating it to them, the value proposition अपना उन तक पहुंच नहीं रहा शायद, that is also maybe another perspective कि शायद उनको समझ नहीं आ रही कि इसमें इनका फायदा ही है। वही वाली बात है। नहीं वो ना, इस पे थोड़ा सा मेरा डिफरेंट ओपिनियन है, वो वैल्यू प्रोपोजिशन समझ आ जाती है, इतने सारे अकलमंद हैं माशाल्लाह, वो समझना चाहते नहीं है कई दफा चीजें, वरना तो आप देखें ना, एक बच्चे को तो नहीं पता होता कि मैकडॉनल्ड्स की कोक की वैल्यू प्रोपोजिशन, बट उसको ये पता होता है मैंने ये लेना है विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग। सो देयर इज समथिंग which is beyond just the standard learning, so people do figure out कि उनको पता चल जाता है कि क्या चीज अच्छी है क्या बुरी है, मेजॉरिटी ऑफ देम, कुछ स्कैम्स में आ जाते हैं, बट अदरवाइज पीपल डू नो। आई थिंक इट्स जस्ट दैट के आई एग्री, कई दफा अवेयरनेस का इशू भी होता है, कई दफा यू आर अर्ली फॉर द मार्केट एज वेल, ये भी एक इशू होता है कि आपकी मेच्योरिटी नहीं होती मार्केट की, यू आर अर्ली फॉर दैट, बट मोस्टली पीपल आई थिंक are smart enough to learn, it's just that the timing is probably not right। मूसा का क्वेश्चन, मूसा ने हाथ उठाया हुआ जी, था, वहाब और भी कोई दो हैंड्स थे, हाँ 2-3 और भी हैंड्स रेज हुए थे, अहद था, वहाब and Musa you can go ahead and then we'll take Wahab and Ahad। Okay, thank you so much for hearing me out first. I have two questions. One, that I am an entrepreneur myself. So when you talked about registering your own company, I actually felt it. But a very personal question, is there a particular stage at which you should get your company registered? Because mostly people like me are students and are already very busy. So when we think about taxation and all, it's like कि आप दफ्तर जा रहे हो, किसी को रिश्वत दे रहे हो, फिर आप सारी फाइलिंग करें, because you don't know it. And the process in Pakistan is like कि आपको
स्मूथली नहीं मिलता. तो दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि हम रुक जाते हैं. वी वांट टू पे टैक्सेस but we don't want to go through the hassle. So that is my one question. What would you recommend कि आपको किस स्टेज पे करना चाहिए? Second question is that आपने अभी बात की थी कि that Facebook has a bigger volume of consumers than any other platform in Pakistan. TikTok उसके ऊपर आ रहे हैं. But when we see the quality of content on Facebook and how Facebook's policy has changed, कि अब friends and family हो गया, do you think that businesses are still relevant on Facebook or Instagram will lead towards a proper business channel if you talk about the platform particularly? Good, interesting questions. सरकारी तौर पे आपका बिजनेस फॉरेन रजिस्टर होना चाहिए. Personally, I would suggest, I think I would recommend it. Find Aisha. I can connect you with few relevant people. Maybe get a good business lawyer जो आपको बेहतर जरा सा गाइड कर देगा कि and on a legal front कि गवर्नमेंट की ना एकदम टैक्स देने की सारी जरूरियत नहीं है आपको. देयर आर सर्टेन एग्जेम्पशंस यू हैव. तो फॉर एग्जांपल स्टार्टअप्स के लिए 3 साल तक टैक्स की छूट है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ तरह के ये पिछली गवर्नमेंट में अप्रूव था, लॉ बना था. इस तरह की डिफरेंट है. जिस तरह ई कॉमर्स बिजनेस में भी टैक्स जो है वो आई थिंक अगर आप एक सर्टेन लिमिट है उसके बाद आपको वो शुरू होता है. तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू हैव अ राइट गुड लीगल एडवाइस, प्रोफेशनल एडवाइस कि आपका बिजनेस जिस कैटेगरी में है, जिस एरिया में है, जिस ब्रांड टेरिटरी में है, उसकी क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. तो जब तक लीगल रिक्वायरमेंट्स की रिक्वायरमेंट शुरू ना हो जाए तब तक जरूर आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप फॉर्मल रजिस्टर करें. उसकी एक लॉजिकल रीजन बता देता हूँ कि पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस बहुत हाई है. वंस यू रजिस्टर तो रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएंगी. ऑडिट भी कराएं, ये भी कराएं, इसको भी जमा कराएं, उसको भी ये जमा कराएं. तो आप एक्चुअल बिजनेस के बजाय इन लवाजमात में बहुत पड़ जाते हैं कि अच्छा जी प्रोफेशनल टैक्स भी है और EOBI भी है और वो भी है, विच इज आई एम नॉट सेइंग वो गलत है. आई एम अगेन सॉरी, नॉट ट्राइंग टू पोर्ट्रे दैट रॉन्ग. आई एम जस्ट सेइंग कि इट इज बेटर कि वो जरा से लेटर स्टेज पे आप उन चीजों में इन्वॉल्व हों ताकि आप इन दैट टाइम फ्रेम अपने एक्चुअल कोर प्रोडक्ट को फोकस कर सकें, सर्विस पे जिस पे आप जिसकी जो स्टार्टअप बना रहे हैं. तो रजिस्ट्रेशन जहां लीगल रिक्वायरमेंट आ जाए वहां से आगे जरूर शुरू करें. बट जितना आप, क्योंकि देखें स्टार्टअप का ना एक बड़ा बेसिक रिक्वायरमेंट है आपको लीन और मीन होना है. आपने कंप्लायंस कॉस्ट बना ली, फिर आपको एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, फिर आपको आउटसोर्स भी करने पड़ेंगे फाइनेंशियल सब, बुक कीपिंग वगैरह. तो आई थिंक वो फिर आप सोचेंगे ये मैं इसमें डिक्लेयर करूँ ना करूँ, वो करूँ क्या करूँ. तो इट्स बेटर. इसीलिए इसी चीज को देखते हुए SECP जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने एक और आसानी भी दी है. उन्होंने कुछ चीजों में सैंड बॉक्स भी अलाउ किया. जिससे अगर आप क्राउड फंडिंग स्टार्टअप हैं तो आप सैंड बॉक्स में अप्लाई कर सकते हैं. जरूर देखिएगा वो भी. बट अगेन माय 2 cents देयर वुड बी टू हैव अ गुड लीगल एडवाइस. खासतौर पे जो फाइनेंशियल लॉयर्स हैं, फाइनेंशियल को भी समझते हैं, उनसे बेहतर आपको मिल सकेगी एडवाइस कि आपकी कैटेगरी के बिजनेस या वर्टिकल या जो जिसमें आप काम कर रहे हैं उसमें क्या टाइम बेस्ट होना चाहिए. दूसरा जो आपने सवाल पूछा फेसबुक और वो वाला इंस्टाग्राम, तो याद रखें फेसबुक को खाली अकेले ना देखें. फेसबुक इज फेसबुक फैमिली ऑफ प्रोडक्ट्स विच इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर एंड व्हाट्सएप. चारों फेसबुक के हैं. सो दे आर ऑल पार्ट ऑफ देयर इकोसिस्टम. तो अभी तक अगर आप मुझसे पूछें तो आई थिंक दे हैव अ रीजनेबल kind of a coverage and a good ROI. I would say the best ROI right now in terms of अगर आप from a business perspective देखने हैं कि आपने conversions और वो देखनी है तो they have the best ROI. बाकी platforms relevant हो सकते हैं different categories के लिए, but I would say the cheapest ROI is on Facebook and family of products still, and then comes Google and then other platforms. Again, varies category to category, brand to brand a lot. Just a high level average बता रहा हूँ. Okay, sir, I had 2 questions. My first question was digital payments, as you said, it's being expensive. So can't banks sometimes take the initiative? क्योंकि बच्चे होते हैं, they are kids who have these, they are going to hostels, और उनके लिए कहते हैं बड़ा मुश्किल होता है to receive payments. कभी होता है they are out of cash. क्योंकि like I was a hostel as well, तो मुझे बड़ा issue होता था ये मतलब कि transaction करने के लिए. तो वो व्हाट इज द फिजिबिलिटी के बैंक्स जो है मतलब कि इस तरह के किड्स कार्ड जो होते हैं एंड दे टेक अप दिस इनिशिएटिव, क्योंकि आई थिंक दे हैव अ बिगर बजट, उनके लिए ये आसान होता होगा कि वो एक स्ट्रीम निकालें इसमें फॉर द किड्स, फॉर उनके लिए आसानी करने के लिए. सेकंड क्वेश्चन सर, इट वाज रिलेटेड टू
आपने एक एग्जांपल दी in the B2B marketplace, ताजर और रिटेलू, those were the names. And sir, उसमें मुझे पूछना था कि when does this company they decide to take this marketing effort to a next notch in type of doing a charity work or such programs? When does it decide to do it? Sorry, my second question नहीं समझ आया, but let me first answer your first question. आपका digital payments वाला. So उसमें आप ये कह रहे हैं कि basically what I understand तो पहला question है कि banks को कोई specific जो है वो teens के लिए या kids के लिए, आप कह रहे हैं बच्चों के लिए कोई अपनी products बनानी चाहिए, like specific cards or discount cards, वो ऐसे credit cards जिसपे आप transactions या वो आसानी से कर सकें. Am I right? Sir. Yes, sir. Okay. So देखें, again I'm sorry for being very candid. देखें, banks भी एक business है, उन्होंने भी अपना ROI देखना है और P&L देखना है. तो उनको सबसे हाईएस्ट ROI जो है ना बैंक को, वो मिलता है अपना कैश को गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में पैसे रख के या लोगों को लोन देके. इसीलिए वो आपको गाड़ियां फौरन दे देंगे. आप अभी जाएं, उन्होंने कहा मैंने गाड़ी लेनी है, फटाफट देंगे आपको. आप कहें मैं क्रेडिट कार्ड पे इंस्टॉलमेंट्स करानी है, फटाफट देंगे, बिकॉज दैट्स वेयर दे मेक मनी. मगर आप लोग उनको कहेंगे ना कि ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करें जो इनोवेटिव हो और वो लोगों की कन्वीनियंस के लिए हो, तो रिमेंबर दे आर अ कमर्शियल बिजनेस. it is in not their immediate interest कि वो ये काम करें. वो पहले अपनी P&L देखेंगे, अपना बॉटम लाइन देखेंगे और उसकी बेसिस पे प्रोडक्ट की डिसीजन लेंगे. आई एम नॉट सेइंग कि जनरली हर जगह ये होता होगा. आई मीन देयर आर प्लेसेस जहां वो सोचते भी होंगे कि हमें शायद कन्वीनियंस पहले देखनी चाहिए, बट उनका ना नैरेटिव ये, इसीलिए फिनटेक के लिए अपॉर्चुनिटी है. दैट्स वेयर फिनटेक्स कम इन. और बहुत सारे फिनटेक्स आने शुरू हो गए हैं जो इस तरह के नए यूज केसेस पे काम कर रहे हैं, बिकॉज स्टेट बैंक ने भी ये रियलाइज किया और बैंक्स भी खुद भी रियलाइज करते हैं कि they are big white elephants with a lot of baggage from the legacy systems. तो उनके पास बहुत सारे पुराने challenges चल रहे हैं, उनका staff train होने वाला है, वो old school branch based banking में involved थे, अब branchless banking पे mobile wallets में आ गए आप. So आप देखें हर किसी की mobile apps भी नहीं अच्छी, because they're not mobile first, they're not digital first banks. So इसीलिए अब जो हैं वो बहुत सारे fintechs आ रहे हैं जो ये use cases को solve करेंगे जो आप बात कर रहे हैं. तो इसमें आपको ये समझने की जरूरत है कि स्टेट बैंक के डिफरेंट लाइसेंसेस हैं. सो अभी इन्होंने एक नया लाइसेंस ओपन अप कर रहे हैं विच इज डिजिटल बैंक लाइसेंस. इसके नीचे PSO PSP लाइसेंस हैं, फिर उनका EMI लाइसेंस है जिसमें वॉलेट्स आप होल्ड कर सकते हैं, फिर उनका एक और लाइसेंस है, आई एम सॉरी मैं भूल रहा हूँ. फिर वो आपको एग्रीगेटर्स को अलाउ करते हैं कि जो जरूरी नहीं है कि वो कोई काम खुद कर रहे हो, बट वो एग्रीगेट करते हैं बाकी बैंक्स की फाइनेंशियल सर्विसेज और उनको यूजर फ्रेंडली तरीके से प्रेजेंट करते हैं ताकि वो डिफरेंट यूजर्स जो हैं वो यूज कर सकें. तो देयर आर मेनी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज जो कि मेरे ख्याल में जो भी आप चैलेंज नोटिस कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग वाली साइड पे है या फिनटेक वाली साइड पे या किसी और भी में, आई थिंक दैट्स एन अपॉर्चुनिटी. वो दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू take it to the next level and jump into it as an entrepreneur and explore it. For example, अभी सादा पे, सेफ पे और कुछ पाकिस्तानी और बहुत सारे हैं, आप देखिएगा पे प्रो. सो फॉर एग्जांपल कोविड में बहुत सारों ने ये रियलाइज किया कंपनीज ने कि जी आपने देखा होगा स्कूल्स ने फीस इकट्ठी लेनी उनके लिए चैलेंज हो गई. जो स्कूल्स हैं वो जब फीस लेते हैं तो उनको ये ऑनलाइन के लिए चैलेंज हुआ कि पेरेंट्स जब जमा करा रहे थे तो बच्चों के नाम कैसे वेरीफाई हों. एक पेरेंट ने अगर 2-3 बच्चों की फीस जमा कराई है, कौन सी वाली किस बच्चे की है नहीं है. अब वो कहते थे अपनी जगह स्कैन करके जी हमें बैंक की रसीदें वो व्हाट्सएप करें. फिर वो अकाउंट्स वाले बैठते थे, सिंक हो रही, वो कंसोलिडेशन नहीं हो रही थी. तो पे प्रो ने एक स्टार्टअप है, उन्होंने ये काम कहा. उन्होंने कहा आप हमारे थ्रू इनवॉइसिंग जनरेट करें, उसके अगेंस्ट जो पेमेंट आएगी उसमें जो ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन आईडी होगा वो ऑटोमेटिकली हम आइडेंटिफाई करके आपको बता देंगे किसके अगेंस्ट आई है, किस इनवॉइस की है, किस बच्चे की है. So everyone is trying to solve different problems. So these are that I would take it as an opportunity कि ये अभी तक banks ने नहीं किया. So I think this is an opportunity to create a space there. और दूसरा जो आपका सवाल था, सॉरी वो आप बता सकते हैं? Sir, second question was उससे था कि it's like you mentioned those B2B market में जो companies थी like Tajar, Retailu, and they are like raising these this $17 million. उन्होंने बहुत बड़ा सम रेज किया. तो मेरा ये था क्वेश्चन कि when does the company decide to do such an activity? अच्छा, उसमें आपने नॉट फॉर प्रॉफिट या NGO की को बात की थी, वो क्या था?
No, I didn't mention अच्छा, about any. okay. So फंड रेजिंग की आप बात करें कि वो कब जाके पैसे रेज करते हैं, करने चाहिए, am I right? Because उनकी marketing effort होती है, and they are like, Okay. you know, who come in line with that. So that's a $1 million question. So generally, this is a full-time kind of a subject जिसको वो कहते हैं venture creation and business proposal basically. But इसमें आपको ये देखना है कि मुझे, so there are different stages. कुछ हैं जिनको हम कहते हैं early stage startups हैं, जो ideation stage होते हैं, जो idea अच्छा create करते हैं. By the way, this is an example of Airlift in Lahore. एयरलिफ्ट के फाउंडर ने ये आइडिया था उसका कि मैं वो पहले तो राइड शेयरिंग वाला किया था ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोलने का, प्राइवेट तो राइड शेयरिंग हो रही है, गाड़ियां मोटरसाइकिल, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही राइड शेयरिंग में, राइड हेलिंग में आ रही. तो उन्होंने उनका ये आइडिया था आई थिंक उस्मान का, कि उन्होंने जाके पिच किया टू फातिमा वेंचर्स एंड दे गॉट देयर फर्स्ट चेक ऑन एन आइडिया. आई थिंक $20,000 या $40,000 जो भी चेक था पहला, दैट वाज एन आइडिया बेस्ड चेक. फिर ये सो अब आइडिया को पिच करना इज द नेम ऑफ द गेम. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका डेटा, आपकी रिसर्च, कंपैरेटर एनालिसिस, मार्केट का ओवरव्यू वगैरह इतना अच्छा होना चाहिए कि आप इम्प्रेस कर सकें इन्वेस्टर को, कि वो अपना आपकी आइडिया की बेसिस पे, आपकी पर्सनल प्रोफाइल को देखते हुए, आपकी स्ट्रेंथ को देखते हुए टीम की, वो पहला चेक लिखते हैं 40 लाख का, 50 लाख का, कि जाएं आप एक्सपेरिमेंट करें, शुरू करें. सो दैट्स ये आइडिया स्टेज है. इसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो आते हैं वो अर्ली स्टेज होते हैं, यानी कि उन्होंने बेसिक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट किया होता है, अभी बेसिक ट्रायल बनाया होता है प्रोडक्ट का, एक दो कस्टमर होंगे, 2-4 कस्टमर होंगे, प्रोडक्ट मार्केट फिट हल्का सा बेसिक टेस्ट हुआ होगा, उनको आप अर्ली स्टेज कहते हैं स्टार्टअप्स. और उसके बाद फिर ग्रोथ स्टेज है, जो चल रहे हैं, एक स्टेज पर पहुंच गए हैं, मगर अब उनको और पैसे चाहिए, अगर उन्होंने बहुत स्पीड पे ग्रो करना है, उनको ग्रोथ स्टेज फंडिंग चाहिए होती है. तो आई वुड सजेस्ट कि इसके लिए ना आप वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम को थोड़ा पढ़ें, देखें कि इसके लिए एक्चुअली इट्स एन इंटरेस्टिंग इकोसिस्टम कि वेंचर कैपिटल की डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं. तो पहला सीड स्टेज है, जिसमें आपके जो मेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो जनरली दीज आर कॉल्ड एंजल्स. वो आपके उन एंजल्स में 3 तरह के लोग होते हैं, F, फ्रेंड्स, फूल्स एंड फैमिली. तो 3 तरह के लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं आपकी कंपनी में. और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है और लोग और इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, और फिर इवेंचुअली यू गेट इनटू companies investing in you, and then you get into institutional investors, larger investors. So this is a full venture capital ecosystem, or I would say maturity stage, जो आपको पढ़ना पड़ेगा कि किस स्टेज पे आके कब पैसे रेज करना है. और ये by the way इस काम के जो लोग होते हैं उनको आप इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट कहते हैं, जो ये डिसाइड आपके साथ आपकी हेल्प करते हैं टू डिसाइड करने में कि आपका पूरा बिजनेस प्लानिंग आपको बनानी पड़ती है, फोरकास्टिंग वगैरह सारा कुछ. So they help you do that. So they are generally CFOs or chief financial officers or CAs or ACCA graduates with experience जो आपको ये काम करके देते हैं. I'm open to time, Irtifa and Aisha. I don't have an issue. I can take few more questions अगर आप rapid fire quick 30-second question and answer करना चाह रहे हैं. और सॉरी मेरे पीछे थोड़ी सी आपको नॉइज आ रही होगी बिकॉज मेरे ऑफिस में अब इस वक्त लोगों का शोर शुरू हो गया. Right. Assalamualaikum, Badar Saab. So my question to you is, in terms of digital skills and digital knowledge, what is our youth exactly lacking? Since you're in a better position to answer this, what are some of the things that our youth needs to develop before they enter the market? अहमद, आप मुझसे सच्ची बात पूछे ना, ये स्किल्स तो अक्वायर की जाती हैं, की जा सकती हैं, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. फंडामेंटल्स थोड़े से मिसिंग है, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, ability to unlearn and relearn, दिल लगा के काम करना, I'll be very honest, diligently own करना एक टास्क को, if कि ये मेरा काम है and I have to deliver it, not wait for anyone कि मुझे कोई आके बताता रहे, हर दफा हैंड होल्ड करे, स्पून फीड करे. स्किल्स तो आती जाती रहेंगी, आज ये गूगल की, कल फेसबुक, परसों कोई नई आ जाएंगी, टिकटॉक का मीडिया कुछ आ रहेगा, तो ये तो आती जाती रहेंगी. आई थिंक द फंडामेंटल्स नीड टू बी देयर, और उसमें एक इम्पोर्टेंट जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स भी है. उसमें एक और इम्पोर्टेंट ये है जो बहुत इम्पोर्टेंट है पाकिस्तानियों के लिए, द एबिलिटी टू एक्सेप्ट कि मैंने गलती किया, मेरे से गलती हो गई. वी डोंट एक्सेप्ट इट एंड वी डोंट वांट टू से सॉरी, एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम. और उसकी वजह से हम लड़ाई कर लेंगे, हम नौकरी छोड़ देंगे, मगर हम गलती नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ईगो खराब हो जाएगी हमारी. तो आई थिंक आई वुड सजेस्ट टू लीव ईगोज बिहाइंड and start learning probably. I don't think skills is a challenge at all. Anyone can learn any skill, कोई मसला नहीं है.
और अगर आपको पैशन है तो आप सीख लेंगे। आप अगर आप किसी अच्छे मैकेनिक के पास जाए ना, तो उसने डिग्री नहीं होती उसके पास कोई, मगर वो आपको बता देता आपकी गाड़ी में से आवाज कहाँ से आ रही है। वो उसको शौक है, उसको पैशन है, हालांकि वो गाड़ी चलाता नहीं है, वो ही कांट इवन अफोर्ड अ कार प्रॉब्ली, बट ही हैज दैट knack for it. So it's not about the skill, it is about the fundamentals in Pakistan, which is a problem. कि आप कितना सच बोल सकते हैं, कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितनी जल्दी अनलर्न रीलर्न कर सकते हैं। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, दीज आर माय ऑब्जर्वेशंस कि ये ज्यादा बड़ा चैलेंज है कमिटमेंट का। सीवी भेज दिया, इंटरव्यू के लिए बुलाया, आए नहीं। अब उसमें तो मतलब अगले के टाइम की वैल्यू नहीं आपने की। 4 जगह से ऑफर लेटर ले लिया जस्ट सो दैट यू कैन सिक्योर वन जॉब, बट डिड नॉट कमिट टू अदर्स एंड वेस्टेड देयर टाइम। हाँ, एक और प्रॉब्लम है प्रोफेशनलिज्म का। जॉब पे अप्लाई किया, hotmail.com से ईमेल आईडी भेजी, sweetboy.com या आई डोंट नो व्हाटएवर। अब इस तरह की ईमेल आईडी से आपकी सोचा कि सीवीज आते हैं कि मैं आई कांट इवन टेल यू, आई डोंट नो कौन सी आईज और क्या ब्लेस्ड आईज और क्या, एंड इट्स शुड, आई मीन आप सोच रहे होते हैं कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और किस टाइप की ईमेल आईडी से किस तरह का सीवी अटैच कर रहे हैं। यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड कि इकोसिस्टम क्या है। एंड एक और चीज, we all want to be called experts as well. तो LinkedIn पे सारे search engine optimization expert हैं, digital marketing experts हैं, specialist हैं। I think there is a lot of learning. एक दो online courses कर लेने से आप expert नहीं बन जाते। You need a lot of hands-on experience. Online learning से आपको एक opening होती है, आपको vision मिलता है, आपको थोड़ा सा सोच आपकी बड़ी होती है, but आपको बहुत सारा hands-on काम करना पड़ता है। और जो लोग startup आप में से कर रहे हैं या freelancing कर रहे हैं, they would realize कि एक बिजनेस खाली एक स्किल नहीं है कि आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया तो आप बिजनेस रन कर लेंगे। आपको उसकी अकाउंटिंग भी करनी है, आपको रिकवरीज भी करनी है पैसों की, आपको टीम भी बिल्ड करनी है, टैलेंट भी एक्वायर करना है, टैलेंट रिटेन भी करना है, आपको ऑपरेशनल कॉस्ट भी देखनी है, आपको लीगल फाइनेंशियल हर एंगल से, पॉलिसी के एंगल से वो बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लेने हैं, विच इज नॉट ईजी। तो इसलिए खाली स्किल इज probably one of the smallest things. I think hard work, honesty, ability to unlearn, relearn, ownership of the task or something. I hope I have not discouraged you to not learn online. Please do learn a lot of things online, but fundamentals जरूरी हैं किसी भी काम के लिए। I think यूनिवर्सिटी में जब बच्चे होते हैं ना, तो ये बड़ा मेहनत करते हैं, सारा कुछ होता है, सीवी का फॉर्मेट मिल जाता है, बनाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बिकॉज एक्सपोजर नहीं हुआ होता, तो एक इन्फ्लेटेड सॉर्ट ऑफ सेंस ऑफ, आप जब सीवी देखते हो तो लगता है कि हर चीज में एक्सपर्ट है बच्चा, जबकि नहीं होता वो। मतलब प्रोफिशिएंट, अब दे वांट टू यूज दीज वर्ड्स, राइट? सो दे यूज प्रोफिशिएंट इन XYZ, एक्सीलेंट एट ब्ला, बट दे हैवंट रियली सीन हु दे आर कंपीटिंग अप अगेंस्ट। सो एक वो जो वैक्यूम में रहने वाला मसला है ना, मैं इसलिए हमेशा इनको इंकरेज करती हूँ कि गो आउट यार, 4 साल है तुम लोगों के पास, इंटर्नशिप्स करो, एक्सपीरियंस गेन करो, बैलेंस करो अपनी लाइफ को। सम ऑफ दीज किड्स गो क्या कहते हैं ओवरबोर्ड in trying to gain experience and they don't, so a lot of them obviously पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ साथ internships कर रहे हैं, साथ साथ job कर रहे हैं, it gets too much for them at times as well, but that said, I would strongly recommend that. but there's इस so स्टेज many पे, of them। हाँ, इस स्टेज पे ओवरबर्डन होना बड़ी अच्छी बात है। आगे कहाँ इनको ऑप्शन मिली, फिर शादियां, बच्चे, फिर तो कम चांस है। दिस इज द टाइम टू एक्सपेरिमेंट। सीरियसली, आई एम ऑन अ वेरी सीरियस नोट। एज अ ये तो टीचर टाइम मैं अपने है। एक्सपीरियंस से बताऊं, ये बच्चे जो है ना इतने ओवरबर्डन हैं और ये चीजों को इतना दिल पे लेते हैं, ये जनरेशन पूरी है, नॉट जस्ट FC स्टूडेंट्स, लाइक स्टूडेंट्स एट LSE or LUMS or any other university. A lot of them are so anxious and you know, high strung now, and they're just at their nerves edge all the time because it's too much for them at times. I think नहीं, वो काम की वजह से नहीं है, वो और वजूहात हैं, वो हम बाद में बात करें। वो ये वजूहात नहीं है, काम की वजह से नहीं किसी को टेंशन होती है। आई बिलीव सो देयर आर अदर रीजंस, मगर मेरे हिसाब से दिस इज द टाइम टू लिटरली वैल्यू एवरी मिनट इन योर लाइफ। दिस इज योर टाइम टू लर्न। शुरू की जो लर्निंग है, जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेस बनती है, आई थिंक दैट गोज अ लॉन्ग वे। और इसमें गलती करना, उसको एक्सेप्ट करके सॉरी कर लेना और मूव ऑन कर जाना, रिलेशनशिप ठीक रखना हर किसी से, जिससे जहां इंटर्नशिप करें, जहां काम करें, इज सुपर वैल्यूबल। अगर आप मुझसे पूछे ना एक वाहिद, सॉरी आपने मुझे स्किल का पूछा था, एक वाहिद चीज अगर आप पूछें कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते और आप सिर्फ एक चीज अगर कर सकते हैं
अगर वो एनालिटिक्स का कोर्स भी नहीं कर सकते जो मैंने पहले बताया था, कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ अगर एक चीज कर सकते हैं और आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, दैट वन थिंग इज टू हैव अ गुड नेटवर्क, know the right people and build that network. Network is of like critical importance, और वो नेटवर्क बनता है जब आप काम करते हैं, मार्केट में बैठते हैं, मिलते जुलते हैं, लोगों को सुनते हैं, पढ़ते हैं. So you need to really know the right people to get things done. अगर आपने टैलेंट भी हायर करना है, आप ज़ाहिर लोगों को जानेंगे तो आप रिक्रूटमेंट भी करेंगे, आप लोग आना भी चाहेंगे, आपकी कंपनी में काम भी करना चाहेंगे. सो दैट नेटवर्क इज क्रिटिकल. तो इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग, आई अंडरस्टैंड इट. सॉरी मैं आपको ऑन अ लाइटर नोट बात कर रहा था, बट आई अंडरस्टैंड आप जिस एंगल से बात कर रही हैं कि लोग वो कई दफा अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना मुश्किल हो जाता है. बट आई थिंक दिस इज द लर्निंग पार्ट कि आपने आगे यू हैव टू जगल बिटवीन अ लॉट ऑफ थिंग्स. यू नीड टू स्टार्ट लर्निंग नाउ कि कैसे मैंने साथ ही काम भी करना है, साथ ही सीखना भी है, साथ ही मैंने अपनी बाकी जिम्मेदारियां, प्रायोरिटीज को भी पूरा करना है. सो कई दफा वो चैलेंजिंग भी हो जाता है. ऑफ कोर्स मेरे लिए भी होता है, आई एम श्योर आपके लिए भी अभी भी होता होगा. और कई दफा आप हर तरफ से मार ही खा रहे होते हैं. वो एक ऐसा दिन भी होता है कि आप सारी चीजें गलत चल रही होती हैं. बट दैट्स ओके, इट्स आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ. बट आई थिंक दिस इज अ गुड लर्निंग टू एक्सपेरिमेंट, टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर अर्ली डेज. मगर ये जो भी कमिट करें वो अगले को डिलीवर करें, बीच में से गायब ना हो जाए. वो पूरा जरूर करें. कमिटमेंट अपना, people should be able to tell कि this person holds his or her promise. अगर वो कमिट करेगा या करेगी तो वो डिलीवर करेगा. अगर so learn to say no as well. If you can't do anything, and so I learned it very late. Learn to say no. Don't accept everything. Must learn to say no. यार मैं कर सकता हूँ but मेरे पास अभी टाइम नहीं है, या मैं I'm stuck. So I think don't commit, overcommit. ये मेरी गलती है. I'm still learning to improve on that. But I think वो retrospect में हम देखते रहते हैं, पाते हैं. But I think this is an important thing. जो आपने बात की कि मगर I agree, थोड़ा सा बैलेंस करना चाहिए. But still, I would still tilt towards more doing than not doing at all. Let's agree to say कि हमारे बच्चों में resilience होनी चाहिए, grit होनी चाहिए, resilience. Absolutely, then they can handle absolutely, anything. Absolutely, goes without saying. और फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी जरूरी है रेजिलियंस लाने के लिए, आपको बहुत जरूरी है. सो यू कैन बाउंस बैक क्विकली. अगर अभी तक आप बोर नहीं हुए तो आई कैन स्टिल टेक. आयशा के पास एक दो क्वेश्चंस थे अभी, वो जी प्लीज. Yeah, we wanted to ask if you have any stance on crypto and NFTs from the marketing perspective, especially in Good Pakistan. question. So मैंने भी अभी रिसेंट रिसर्च की. मैं भी बड़ा पहली कंफ्यूजन ये थी कि पता नहीं हलाल है हराम है, क्या करना है क्या नहीं करना. तो जिस दिन के मैंने डाले उस दिन से बिटकॉइन नीचे जा रहा है. बट ये है कि मैंने रिसर्च की पहली बार. सो एक और बात आई थिंक जो मैं कहता हूँ ऑनलाइन रीलर्न वो भी जरूरी है, बिकॉज बहुत सारी नई चीजें आती नहीं. तो मैंने कैसे रिसर्च की मैं शेयर कर लेता हूँ, आप भी आई एम श्योर यू कैन डू बेटर बीइंग डिजिटल नेटिव्स. तो मैंने एक काम में करता हूँ, जब मैंने इस तरह की कोई भी रिसर्च करनी होती है तो मैं डिफरेंट उलमा के ऑनलाइन यूट्यूब पे उनके पर्सपेक्टिव सुनता हूँ. अभी भी आप जाके सुनेंगे बहुत डिफरेंट है. सम कैटेगोरिकली से कि गलत है, सम कैटेगोरिकली से कि आप दिस इज ओके, एंड देन देयर इज अ ग्रे एरिया एज वेल. तो सो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं. मेरे हिसाब से जो मैंने रिसर्च की है, जो मुझे समझ आई है, जब तक कि इस चीज से किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा और आप अपनी सारी सेविंग्स लाइफ की नहीं डाल रहे, एक सर्टेन पोर्शन जो आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज करना अपनी सेविंग्स का, वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए डाल रहे हैं और उससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा, और तो इट इज ओके टू एक्सपेरिमेंट. एक बात. दूसरी बात, आइडियली स्पीकिंग ऐसी करेंसीज होनी चाहिए जो इवेंचुअली किसी ना किसी गुड्स या सर्विस के साथ कनेक्ट भी हो रही हो, जो मेरी एक और लर्निंग भी है, ताकि वो खाली ये ना हो कि वर्चुअल रह रहा हो, बट देयर इज सम यूज केस एज वेल. So I strongly believe crypto is going to stay here, especially blockchain. Blockchain as a baseline for crypto, or blockchain is a great technology, and I think cryptos में experiment करना चाहिए. मैंने भी try किया है, मैंने भी I'm experimenting as well, badly unlucky so far, but I think जरूर करना चाहिए, सीखना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्रिप्टो काम कैसे करता है, इकोसिस्टम क्या है. चाहे $100 डाल के देखें, एक्सपेरिमेंट करें, देखें करता क्या है, होता क्या है, इसकी कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्रिप्टो में और नॉर्मल करेंसी में फर्क क्या है. ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लोर के CBCD वो क्या है, कि यानी कि
सेंट्रल बैंक का जो क्रिप्टो करेंसी जो वो अपनी लॉन्च करता है, हर सेंट्रल बैंक, अब सेंट्रल बैंक अपनी ऑफिशियल लॉन्च करें बिकॉज दे हैव सीन इन द वर्ल्ड कि लोगों को चाहिए क्रिप्टो, दे आर लुकिंग फॉर क्रिप्टो, और क्रिप्टो का नैरेटिव को भी समझने की कोशिश करें कि क्रिप्टो चैलेंज क्या कर रहा है. इट इज चैलेंज द स्टेटस को ऑफ अ सेंट्रल बैंक बाय डिसेंट्रलाइजिंग peer-to-peer payments. So and so you need to understand the ecosystem largely as well. और so I think important है समझना, करना, एक्सपेरिमेंट करना. एंड आप सबके लिए तो मैं जरूर रेकमेंड करूंगा. आई थिंक एनीवन अबव 40 it's a bit of a challenge to understand कि वो कैसे वेरिफिकेशंस करनी है और क्या करना है, बट यू मस्ट लर्न के बाइनेंस का डैशबोर्ड कैसे देखना है, या क्या क्या चीजें वहां आ रही हैं, स्टॉक ट्रेडिंग कैसे करनी है. एंड वन मोर रीजन, एक बाय द वे एक और लर्निंग मेरी जो कहीं किसी स्कूल यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती, कि डू स्टार्ट, जब आप करियर शुरू करें, स्टार्ट प्लानिंग योर रिटायरमेंट एज वेल. डू ऑनलाइन ट्रेनिंग्स देयर कि पैसे कैसे सेव करने हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर्सनल कैसे करनी चाहिए. ये किसी स्कूल में कोई नहीं पढ़ाता, किसी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली. मैंने भी नहीं पढ़ा था एंड आई एम रियली बैड विद इट, बट आई थिंक दिस इज एन इंपॉर्टेंट लर्निंग यू ऑल शुड डू एट दिस स्टेज ऑफ योर करियर एंड लाइफ, कि पर्सनल सेविंग्स कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है, वेल्थ क्रिएशन कैसे करनी है, कैसे होती है उनके. सो आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट जब भी आप लोग कोई काम करें. एंड दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स कि पैसिव इनकम में अपॉर्चुनिटी है. जिस तरह रियल एस्टेट में लोग इन्वेस्ट करते हैं और उससे एक पैसिव इनकम अर्न करते हैं, आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी एज वेल. बट प्लीज डोंट होल्ड मी टू इट 10 years डाउन द रोड, जैसे आपने 11 साल पहले कोई मेरा टेड टॉक निकाली. आई डोंट इवन रिमेंबर कि मैंने क्या बोला. No, that was a question which was, I had this question because I'm a freelancer too. So it was very surprising for me that I'm happy to say sorry 10 years down the road. Okay, मेरी गलत से थी, and absolutely I could be wrong. Yeah. Anyways, I think we're done with the questions. If there's anyone else, you can raise your hand. I think काफी बोर हो गए होंगे सारे. नहीं बिल्कुल बहुत शुक्रिया. मुझे लगता है कि आज का सेशन was so chock full of learning ना, मतलब इतनी insights, इतनी information, इतनी resources आपने identify की हैं. There has been so much that we've taken from this session. मतलब it was invaluable. मैं ये सोच रही थी यार हमने पहले क्यों नहीं किया कभी ये. We should have done this. वैसे जो पिछले बैचेस को मैंने आया हूँ ऐसे, मैं एफसी कॉलेज कैंपस पे आया हूँ. आई थिंक मुझे साइमन ने बुलाया था. It's been a while. It's been a few years. That was a long time ago. Simon's long time. It's been a while. It was amazing. Thank you so much, Badar. Honestly speaking, मैं इसकी I can't wait for two things. एक इसकी वीडियो अपलोड हो जाए जो कि हम एडिट करके इसको अपनी वेबसाइट FC के YouTube चैनल पे डाल दें, so that a lot more people can learn from, benefit from what you had to say. और दूसरा ये आयशा जब इसकी रिपोर्ट बनाएगी, because I've asked them to make clean transcripts of all the interviews that we're conducting. Absolutely. So, excellent. And we will inshallah share that with you as well. मुझे ऐसा एक कोर्स हो गया जी, आज क्रैश कोर्स हो गया. नहीं प्लीज डिजिटल एक्सप्लोर करें, बहुत सारी और डिजिटल में नई चीजें एक्सप्लोर करने वाली. एंड आई थिंक फ्रीलांसिंग हर किसी को नहीं चाहिए. बाय द वे आयशा, वेरी ऑनेस्टली अगर आप मुझसे इन ऑल ऑनेस्टी पूछें, फेयरली स्पीकिंग, अगर आज कोई बच्चा अपनी कॉलेज की फीस नहीं दे रहा पाकिस्तान में, सो इट्स अ शेम. There are so many opportunities that we should not be dependent on our parents for our college. I'll be very honest. I think हम सिर्फ we don't make an effort. और पाकिस्तान में क्योंकि ट्रेडिशन बन गई है कि पेरेंट्स पे कर रहे होते हैं फीस हमारी सबकी, तो आई थिंक इट्स अ शेम कि हम अपनी फीस खुद नहीं पे कर पाते. और अगर जो लोग अफोर्ड भी करते हैं, आई थिंक उनको भी काम करना चाहिए ऑनलाइन, और वो अर्निंग्स उनको डोनेट कर देनी चाहिए किसी के लिए. I think there's a huge opportunity, and freelancing is I mean वो उसमें भी हम we are doing well as a country, but I think every student must experience freelancing so that they should know कि उनको क्या करना चाहिए, professionalism क्या होती है. Yeah, I can say this on behalf of FCC students at least कि हमारे बहुत से students freelancing कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी फीस खुद पे कर रहे हैं. Google Digital Garage का वो जो fundamentals of digital marketing course है, almost all marketing majors at least have completed that course. Google Analytics का course भी कर चुके हैं बहुत सारे बच्चे. So I mean we're on in the right direction बच्चे हमारे जो हैं. So आप जैसे mentors साथ में हो तो मैं सोचती हूँ कि कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे ये. It's a team effort होगा. बिल्कुल. मैं भी लाहौर में, and happy to host you guys anytime at Bremer. जब भी आप कभी प्रैक्टिकली आके देखना चाहें कि एजेंसी में लड़ाई झगड़ा कैसा हो रहा होता है क्लाइंट के साथ, तो हैप्पी टू होस्ट एज वेल. जबरदस्ती. अच्छा, एक बिफोर वी रैप अप बदर, देयर वाज दिस वन क्वेश्चन एवरीबॉडी हैज. जब आपने शुरू में एक सवाल पूछा था कम्युनिकेशन बजट के बगैर
फेसबुक को डबल कैसे करेंगे उसकी ऑडियंस, तो उसका जवाब आप देते हुए जाइए। वो so that is where you need to really think about the product. जब पैसे नहीं है ना, तो प्रोडक्ट इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी कि आपको पैसे लगाने ना पड़े। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग हो रही हो आपकी, लोग आपके इन्वेस्टर बन जाए, एवरी यूजर बिकम्स योर इन्वेस्टर। सो आपने नोटिस किया होगा, जैसा अभी वो आजकल वो आया था, कौन सी आई थी वो नई ऐप जो ऑडियो ओनली, नहीं ऑडियो ओनली, वो नहीं स्नैक नहीं, सॉरी, आई एम फॉरगेटिंग इट, क्लब हाउस, करेक्ट। सो क्लब हाउस में था इनवाइट्स से, सो एवरीवन वाज लुकिंग फॉर इनवाइट्स, ठीक है। सो इट क्रिएटेड स्केर्सिटी, और उसकी वजह से एवरीवन, और फिर वो पहले आईफोन पे था, फिर एवरीवन वाज लुकिंग एंड्रॉइड पे कैसे चलाऊं मैं उसको। तो एंड दैट, सो आपकी प्रोडक्ट इतनी स्ट्रांग हो गई, एवरीवन इज, आपको मार्केटिंग ना करनी पड़े। क्लब हाउस ने तो नहीं कोई टीवी में ऐड लगाया या फेसबुक पे ऐड लगाया, कुछ किया, बट द प्रोडक्ट इन इटसेल्फ हैड स्ट्रेंथ कि एवरीवन वांटेड टू एक्सपेरिमेंट, कि यार मैं भी एक दफा तो देखूं। अब एक दफा कुछ देख ले, आप सोचें एक दफा ट्रायल कर ले, तो फिर ऑटोमेटिकली अगर 1% 10% भी स्टिक कर जाएगा, तो यू विल हैव अ रीजनेबल काइंड ऑफ इकोसिस्टम देयर। तो प्रोडक्ट पे काम करना बहुत जरूरी है। सो इवेंचुअली माय जॉब एट Facebook was to help improve the product by testing, by experimentation. That was my role. तो मेरा काम ये था कि मैं प्रोडक्ट में डीप डाइव देख रहा था कि क्या गलतियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हमें ठीक करनी चाहिए, और वो मैं खुद तो नहीं असेस कर सकता अकेला या कोई भी इंडिविजुअल। तो फिर आई यूज्ड टू गो इन डिफरेंट एरियाज एंड आस्क पीपल कि आप फेसबुक इस्तेमाल करें, मैं सिर्फ देखूंगा, और इस देखने के और ऑब्जर्व करने के आपको एक गूगल की टी शर्ट या फेसबुक सॉरी टी शर्ट दूंगा, या गिफ्ट दूंगा, या खाना खिलाऊंगा, या कुछ भी, जस्ट सो दैट आई कुड सी कि लोग फेसबुक कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या चीजें जो हम गलत कर रहे हैं जो हमें ठीक करनी चाहिए। सो वी फिक्स्ड अबाउट 500 थिंग्स इन those 6 months, और लाइक छोटी छोटी एरर्स हैं जिसकी वजह से हमने देखा कि यूजर्स का यूजर एक्सपीरियंस, जो यूएक्स जिसको हम कहते हैं, वो खराब होता है। दैट नीड्स टू इम्प्रूव। तो हम कई दफा देखते हैं मोबाइल ऐप में वो क्लिक नहीं हो रहा होता, या इतना छोटा लिखा होता है, या बटन का कलर बिल्कुल वो मैचिंग टू द बैकग्राउंड होता है, या लोड नहीं हो रही वेबसाइट। दीज आर स्मॉल लिटिल थिंग्स व्हिच हैव ह्यूज इम्पैक्ट in terms of your user experience and then eventually conversion. तो वो चीजें ठीक करने से without any marketing fund you could grow, and that's what we did. So I didn't have a marketing budget, and I just did that, and I helped Facebook work with the team to help them improve the product, and hence we were able to scale it. But of course उसकी तब तक पहले ही वैल्यू बहुत ही फेसबुक की और सारा कुछ था, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये दिस इज एक्चुअली इवन ट्रू फॉर लोकल एप्स एज वेल। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी बनी होगी, सुपर सॉलिड होगी, तो फिर आपकी जो मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट है प्रोपोर्शनेटली कम होगी कंपेयर टू एनी कंपेटिटर, जहाँ प्रोडक्ट जो है वो बड़ी स्क्रैपी सी होगी और वो आपका यूजर एक्सपीरियंस वहाँ प्रॉब्लमेटिक होगा। एंड बाय द वे दिस होल्ड्स ट्रू इन एवरीथिंग। आप देखें कई दफा वो आप लोकल चीजें लें तो उनके रैपर्स अच्छी तरह खुलते नहीं हैं, अगर आप इम्पोर्टेड लें तो वो रैपर आसानी से खुल जाएगा। छोटी छोटी यूजर एक्सपीरियंस की चीजें, आई थिंक नॉट ओनली इन डिजिटल बट ऑफलाइन प्रोडक्ट्स एज वेल, कि हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अब गाड़ियों में हमेशा सोचता हूँ कि पता नहीं आज तक गाड़ियों के डैशबोर्ड में पाकिस्तान में कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि मोबाइल भी कहीं रखना है हमने। तो वो कोई भी सॉकेट ऐसा नहीं जिसमें प्रॉपर मोबाइल सही तरह फिट करके लगा के गाड़ी चला भी सकें और वो मोबाइल भी सही लगा रहा है। I can't really figure out कि वो डेक की जगह है, सिगरेट लाइटर भी है, सब कुछ है, बट they haven't figured out in these last 10-15 years कि मोबाइल को कहाँ सही फिट करना चाहिए नेटिवली। हाँ, एड ऑन्स आप बाद में लगा लें, जो भी वो अलग बात है, बट नेटिवली they haven't yet come out कि यार 100 मिलियन लोग हैं जिनको मोबाइल है और गाड़ी लेते हैं, तो they need to put their phones somewhere। तो चार्जर फोन का नहीं लगाते, आप खुद लगा लें। फंडामेंटल्स हैं, बेसिक्स हैं। तो यूजर एक्सपीरियंस जो इंप्रूव कर लेगा वो गेम जीत लेगा मेरे हिसाब से। So that's exactly what we did at Facebook. I have another question. So it's related to Brainwaves. When planning on a campaign, how do you satisfy the client and also not neglect the ROI? That is according to your research and your strategy. आयशा, यहाँ जो है ना वो एक कोर्स होता है नेगोशिएशन स्किल्स का। So I think that's important for everyone. So एक होता है ब्लैक, होता है एक वाइट, एक होता है ग्रे। So you need to really understand. I think क्लाइंट्स के साथ काम करना, सर्विसिंग, मैंने पहले ही हाईलाइट किया था, इज नॉट ऑलवेज इजी। कुछ लोग बहुत जो है वो डेटा बेस्ड होते हैं, तो वो बहुत डीप डाइव करते हैं और वो दे आर इजी टू वर्क विद बिकॉज वो डेटा बेस्ड डिसीजंस ले रहे होते हैं। कुछ लोग इमोशनल डिसीजन ले रहे होते हैं
क्योंकि मियाँ साहब ने या सेठ साहब ने कहा है तो ये ऐसे होना चाहिए। तो अब जब वो ये कह देते हैं तो आपकी pragmatism, आपका लॉजिक तो वैसे ही खत्म हो गया, बिकॉज इट वाज नॉट बेस्ड ऑन एनी लॉजिक के मियाँ साहब ने क्या कहा, इट वाज बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल चॉइस और हिज पर्सनल ओपिनियन। तो वहां जरा आपको चैलेंज होता है, एक वो इशू है। दूसरा, कई कैंपेन्स ऐसी प्लान होती हैं जहां जो बहुत डिजिटल नेटिव्स के लिए टारगेटेड हैं, बट जो ग्रुप ब्रांड मैनेजर या जो सीईओ हैं या जो भी सीनियर स्टाफ या मैनेजमेंट है वो डिजिटल इमिग्रेंट्स हैं। वो कहते हैं आपने कैंपेन रन किया, हमें तो पता नहीं चला, हमने तो ऐड देखा ही नहीं। अब उनको बताना पड़ता है कि आप टारगेट ऑडियंस ही नहीं थे, आपको नजर भी नहीं आना चाहिए था। तो सो आई थिंक डेटा बेस्ड एंड थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के साथ, यानी कि आप उनको एक्चुअली लाइव डेटा दिखा सकें। और एक और चीज, दूसरी बात, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई एम श्योर आप सबने मार्केटिंग पढ़ी है, जो the big M and the little m of marketing this is where it comes kind of connects, कि अगर आपकी स्ट्रेटजी ठीक होगी तो उस बिजनेस को इवेंचुअली अपने बिजनेस में कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा आपकी कैंपेन से। अगर आपकी किसी कैंपेन से बिजनेस को कोई फायदा नहीं हो रहा तो पहली बात वो कैंपेन का वैसे ही कोई फायदा नहीं है। मगर क्या फायदा मिलना चाहिए हैज टू बी डिटर्मिन्ड इन एडवांस एज अ KPI कि ये डिलीवर होगा, इस कैंपेन का आपको ये फायदा होगा। कोई कहता है मुझे अवेयरनेस चाहिए, कोई कहता है मेरी सेल्स बढ़नी चाहिए, कोई कहता है मेरी फुटफॉल मेरे स्टोर पे बढ़नी चाहिए। वट एवर द यूज केस इज हैज टू बी डिफाइंड इन एडवांस, और जो कैंपेन के रिजल्ट्स हैं मस्ट ट्राई टू डिलीवर ऑन दैट प्रॉमिस, एंड देन द इटरेशंस कीप ऑन गोइंग। So I think if generally speaking what I realize and see is mostly लोग campaigns बड़ी tactically run करते हैं, strategic thought नहीं होता पीछे, and that's where their disconnect is। कि जरूरी नहीं Facebook पे पोस्ट लगाना तो कोई मसला ही नहीं है, I think anyone can do anything। It is more about connecting that to the strategy and the actual business goals of the company. I think that's important, and that comes with experience. Thank you, sir. That would be it from the audience. Thank you for your time. And yeah. Meji, you're most welcome. And once again, thank you to Irfa, yourself, Sara, everyone. अदनान ने मुझे बहुत आप ये जूम कर लेंगे वीडियो तो फिर आपने शेयर कर लिया, सो रियली अप्रिशिएट, थैंक यू फॉर टाइम। एंड आई एम सॉरी अगर मेरी कोई कैंडिडेट बात किसी को अगर अच्छी नहीं लगी या चैलेंजिंग थी या 10 साल के बाद गलत निकल आए तो प्लीज अपॉलॉजीज इन एडवांस। आयशा मुझे नहीं पता 10-11 साल के बाद नेक्स्ट कौन सी स्टेटमेंट मेरी पकड़ेंगी तो but thank you so much everyone for your time and patience, and happy to learn from you। अगर आप लोगों के कोई thoughts हैं, feel free to connect with me on social media। I'm mostly available on most of these media। TikTok पे हूँ but I don't really use it। I just following TikTok એટલે जाके check out करना चाहिए। नहीं zero है, सिर्फ account बना हुआ है। But thank you so much for taking time out and learning and listening। Thank you very much, Mr. Badar। Yes, this is Rumail, and I'm speaking on behalf of the Career Services and Internships Office. Ma'am had to leave because, as you already know, she's on a travel right now. So thank you very much, and thank you to Ma'am Irtafa as well for helping us in setting this up for you. And I believe it has been a great learning experience for all of our students right now, because I was a part of this, even though I'm not from a business background, but a lot of things made sense to me. So that is just one way of saying that your language was pretty simple and understandable, comprehensive for a student, for a non-business student like me too. So thank you very much. And I believe a lot of students have learned a lot from this session. And also that your company, if they are, our students would be delighted to avail any internship opportunities if there are any. Yeah, we have opportunities for designers right now. So anyone interested, please feel free to just drop me a note। And by the way, एक और चीज, जब भी आप बिजनेस करें, जॉब करें, एक चीज याद रखिएगा, money can buy you a bed but not sleep। So monetary gains is not only the success। So just keep that in perspective जब भी आप कोई काम करें। खाली पैसे से सक्सेस नहीं आएगी। You need to really think कि और क्या चीज है जिसे, I mean, you should earn money, everyone has to make money, but it should be a byproduct and not the end goal। So remember that। But thank you, Romel, for your kind words। And happy to internships के लिए we are always open, by the way। हमारी कोई खास fixed time नहीं होता year का, so we are very open। If you could share some resumes, we would be happy to consider them for this batch as well। For sure, that's perfect. We'll get on to that। And thank you very much, students, for being patient and for this learning that you've had। So now is the time you're free and start to practice whatever you learned।
Bye-bye, Thank you, everyone. Have a Rumail. good day. Thank you, Badar. I think we'll wrap it up here, and I hope this is just the first of many engagements that we'll be having with you in the future. जी anytime. बिल्कुल, हम बिल्कुल आपको तंग करते रहेंगे, इंशाल्लाह आपसे सीखते रहेंगे. Thank you guys. Thank you for being here. Thank you, Aisha, for moderating. You did a wonderful job. I love the fact that you dug out the TED talk. So extra points for you, at least from my side. Chalo ji. Thank you so much, brother. It was a pleasure having you with us. Likewise, ji. Allah Hafiz. Bye-bye. Hafiz.